दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिजनार्दनः दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिजनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम्. Thank you very much indeed, gentlemen, for doing the honors. Thank you. May I now request Mr. Nandkishore Kaleji, Deputy Director, Core TATR, to kindly do the honors of presenting a token of gratitude, a small memento, to all our dignitaries on the dais. Ladies and gentlemen, we are indeed honored that this occasion is being graced by all our eminent dignitaries. Thank you very much indeed for doing the honors. May I request all our dignitaries to come together for a group photograph before we request you to take your seats in the front. Thank you very much indeed. Thank you, sir. May I request everyone to kindly take your seats in the front. As ladies and gentlemen, we present before you an exclusive first look at the teaser for The Wild Tadoba, a film about our beloved tiger reserve. This project was commissioned last year by the Honorable Minister, Shri Sudhir Mungantwarji, to the renowned wildlife filmmaker, Shri Subbiah Nalamuthu. This has been a labor of love for Shri Nalamuthu, who has been filming on Tadoba for the last 4 years, and this film will be released this year. And ladies and gentlemen, we are of course fortunate enough to have a look at it before it has been relieved. May I once again invite on stage Mr. Kale and Mr. Nalamuthu, as I would request Mr. Kale to kindly do the honors of felicitating Mr. Nalamuthu on the stage before we showcase his film. Thank you, Nalamuthu sir, for being here with us and for giving us this opportunity to see this beautiful film. Thank you, Mr. Kale, for doing the honors. And ladies and gentlemen, sit back, relax, and enjoy this beautiful film on Wild Tadoba. Can we switch off the lights, please?
Ladies and gentlemen, we are just getting the film back to you. We are having some technical problem here in running the film. We'll be back. Meanwhile, so ladies and gentlemen, this is an exclusive preview that we are going to have of this wild Tadoba look. Ladies and gentlemen, all good things in life do not come easy. So we have to wait for some time to view this beautiful film that we are going to present. चल तो जाए एक बार चल जाए हाँ हाँ नंदकिशोर काळे वाला था जितेंद्र रामगावकर पीपीटी अभी शुरू कर दी पीपीटी फिल्म शुरू हो रहा है सब ट्राई करें आपकी पीपीटी शुरू करते हैं फिर हाँ इसकी जगह पे जितेंद्र रामगावकर डायरेक्टर ताड़ोबा This jungle is more than just a place to them. It's their kingdom. This dense foliage, these towering trees, these beautiful meadows, these stunning lakes, they're not just part of the landscape. They are their sanctuary. This isn't just any habitat. This is one of the last remaining tiger heavens in the world. Welcome to Tadoba. Tadoba lies in Maharashtra's Chandrapur district, where spectacular nature thrives alongside the tales of an ancient legend. The place echoes the name of a deity, revered by the local tribes who also call this forest home.
Spanning 625 square kilometers, the jungle's landscape is as diverse as it is breathtaking. From the protective bamboo forests and old world trees to the layered rocky beds echoing ancient rivers, the jungle's rich ecosystem cradles life in all its forms. And at the heart of the jungle lie a few glistening lakes that create memories that last a lifetime. The jungle's core area is where Tadoba National Park and Andhari Wildlife Sanctuary unite to form one big tiger reserve. It is here that tigers experience the full glory of natural abundance. With large territories and a robust prey base, tiger dynasties thrive here, passing down ancestral wisdom to the next generation. Each season leaves its imprint on the jungle, from the ethereal beauty of winter's fog to the scorching heat of summer and the life-giving rains of the monsoon. Despite this ever-changing landscape and harsh weather, Tadoba remains an unwavering sanctuary for countless species, each playing a vital role in maintaining the delicate balance of the ecosystem. And to achieve that, every day unfolds a new dance between prey and predator. Survival of the fittest is the jungle's ultimate rule that all animals must accept. Being at the top of the food chain, tigers get most of the attention, but their dominance doesn't come easy. Like their forefathers, they fight to earn it. Beyond the core lies the buffer zone, where wildlife and human beings coexist. This isn't ideal, but the tireless efforts of the Forest Department make sure that we do so peacefully. Today, Tadoba stands out as one of the very few reserves where tigers are thriving even in the buffer zones. Life hasn't always been easy for tigers because of man-made challenges, but human rehabilitation, rewilding and creating vital wildlife corridors have had a tremendous impact on the tigers that have doubled in numbers in the last 10 years. Tigers have ruled our jungles long before humans set foot inside them, and Tadoba recognizes their role in leading our natural world into the future. They are the masters of these terrains, the rulers of these soils. And Tadoba is not only a place where tigers are found, it is their home. It is where they belong. Thank you very much indeed, Nalamuthu sir, for that beautiful film. And now, ladies and gentlemen, I have the privilege in inviting on stage our eminent dignitaries. I would like to invite Mr. B. Venugopal Reddy, Principal Secretary Forest, Maharashtra. May I invite Mr. Shailesh Timburnikar, Principal Chief Conservator of Forest, HOFF, warm welcome sir. Inviting Mr. Mahib Gupta, Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, warm welcome to you sir. Inviting Jitendra Ramgaonkar, Field Director TATR, and Sunita Vishwasji.
Principal Chief Conservator of Forest, warm welcome to you, ma'am. And of course, requesting Mr. Kale to kindly take a seat on the stage. And I would begin the proceedings of this session by requesting Mr. Jitendra Ramgaonkar. Shri Jitendra ji to kindly do his presentation on the present scenario of tourism at the Tadoba Tiger Reserve, TATR. So let's put our hands together to welcome Sir for his presentation. Honorable dignitaries on the diet and eminent panelist, audience. It's a privilege to be here before you all and introduce the ecotourism model of Tadoba Tiger Reserve. Tadoba Tiger Reserve is located in the heart of the district. It is surrounded by buffer on most of the sides except little bit of northern side and south western side. You all are aware of the chronology of the park. It's one of the oldest national parks in the country. It has grown in size by addition of a sanctuary and buffer in 2013. There is a unified control of the park. The developments in tourism in this landscape started around 10 to 15 years ago when villages in buffer were involved in the tourism activity. Not only involved, but they were made the owners of those activities, and all the activities related to tourism were handed over to them for management. This has developed their stakes into the tourism to such an extent that now entirely most of the tourism of the park is handled by local communities through the gate managers, through the gypsy drivers, through the guides, and they are also involved in management of all the other activities other than wildlife safaris like boating, adventure parks, cycling, nature trails, and numerous other activities which are there in the park. If you look at the data, there is a point when the revenues of the park from the buffer and the core becomes equal, and after that the revenues from the buffer of the park outpaces the revenues from the core area of the park, and that is what has been prescribed in the national guidelines, that the tourism has to be in a way restricted in core areas and developed in buffer areas. This landscape, with all its 106 villages, 75,000 plus population and 18,000 plus households, it's an area which is densely populated if you look at the remoteness of the area, and in spite of that, the pressures on the buffer are in such a way controlled. The pressures of the needs of the human beings, communities living around are in such a way controlled that the tiger population in buffer is thriving, and we have noticed the trend when we estimate the tiger populations, the spatially explicit data that we see, we notice that the more tigers are now using core as well as buffer, both the areas, so that there is more migration, more chances of dispersal, and genetic vibrancy, the diversity, it is more in this population. So that has been the result of last 10 to 15 years, and today we have 6 core gates, 17 buffer gates, and directly 400 plus local community members are benefited. And if you look at the
other multiplier effect of these direct activities, around 5,000 households are directly involved in one or the other tourism activity in this area. You can look at the homestays and resorts. There are 60 plus resorts, 20 plus homestays. The activities that we mentioned, there are numerous activities other than the wildlife safaris, because as we are all aware, there are restrictions in the movement of vehicles inside not only core but also in the buffer area. There were no direct regulations on the buffer until now, but as a park, we had decided through local advisory committee that there has to be restriction. All the rules were approved by local advisory committee for buffer area, and now those rules are being ratified again and again. Whenever there are changes required, it is done in consultation with the community and also in consultation with the technical experts. This is the data that you can see. There is a national tourism from the India and tourists from the abroad. If you look at the revenue, it has significantly grown, except the period during COVID. Next. This is a trend depicted in the graphical. You can see how the COVID has affected, and now the international tourists are also increasing. Next. The main objective of making this presentation was to just emphasize that tourism is just a byproduct. You can achieve conservation through it, and to achieve that conservation through tourism, we need to achieve something more, and that something is prosperity of the community. If you can achieve the prosperity of the community, if you can take care of their livelihood needs, if you can take care of their income in a proper way, in a non-extractive manner, as we call it in ecotourism terminology, we have rightfully and significantly shifted the use of this forest from extractive use to the non-extractive use. And that is what we want to promote further in greater Tadoba landscape that goes beyond Tadoba buffer. There are sanctuaries in the district like Kanargaon, Godezari. There are areas which are not even sanctuaries, but there are good amount of tigers, good number of even prey populations. So the future lies in extending this model to those areas, leveraging the facilities and the recognition that Tadoba has got, and bringing prosperity to those communities so that they also develop stakes into the conservation of tigers for a long time, and through that numerous other species that is protected in a tiger landscape. Thank you so much. Thank you very much indeed, sir, for that elaborate presentation on the Tadoba Andhari Tiger Reserve. And ladies and gentlemen, I would also like to invite on stage our eminent dignitaries, Mr. Sunil Mehta, Member Governing Council, Maharashtra. Let's put our hands together to welcome sir. May I also invite, present here with us, Mr. Saurabh Kant Singh, Advisor, ICICI Foundation. A warm welcome to you, sir. And ladies and gentlemen, we have such eminent dignitaries on the stage. I would now like to request Mr. Shailesh Tumbarnikar, Principal Chief Conservator of Forests, to kindly throw some more light on sustainable tourism. Let's put our hands together to welcome sir. Honorable Principal Secretary, Forest, Maharashtra State, Sri Venugopal Reddy ji, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, all the participants in this panel discussion. I welcome you all in this Tadoba Mahotsav, and especially in this panel discussion. We all know that Tadoba is a grand success from the at the national level as well as at the international level. Now, why it is so? One of the reason
that our field director has already elaborated is the empowerment of the local people, involvement of the local people, and sharing of the benefits of ecotourism amongst the local people. That has turned out to be the sustainable model in the country. That is one thing. That he has also indicated that whatever wealth that accrues out of this ecotourism should be shared with the local people. So that is one aspect. Second aspect is if you see the professional management of Tadoba, then the main reason which I pursue is that some of the villages were relocated out of the national park, and the relocated area was developed into meadows, and in every village there were water bodies. So you will find that the meadows surrounding the water bodies along with the fruit trees, that was converted into a sort of a local micro ecosystem, and that has helped to thrive the herbivorous animal, and later on the carnivorous animal were also attracted in their particular area. So the tiger density is highest, and it has become a abode of tigers. This is one of the reason that you will not find such grasslands or meadow development in Navega, Nagzira, and in other national parks. That could be one of the reason as to why the tiger conservation has succeeded in this area. Now, so far as the ecotourism is concerned, as per the existing rules, regulations, we cannot increase the ecotourism in a linear way. That whatever number of people that they would be visiting in future, we cannot accommodate them, because right now there is a ceiling, no, that 120 vehicles per shift, then 120 vehicles in the afternoon in the core area. There are 6 gates in the core area, 12 gates in the buffer areas. It can be increased in buffer areas, no doubt about that. But in a linear fashion, we cannot increase the number of safaris. And all tourists want to see tiger. So the whole ecotourism has become tiger centric. So there has to be a shift. Now there are many beautiful spots. Then we have to sensitize the tourists and the people to appreciate nature, right? So there are crocodiles in that area, then there are beautiful birds, then the landscape. So that sensitization of the tourists is required, of all the people who are visiting this tiger area. So if you visit Tadoba, and day out you will find that all gypsies compete with each other. Once they come to know that the tiger is found in particular compartment, a particular area, then all they vie with each other and drive the vehicles at a faster rates so that the tourists can see the tigers. So while doing so, in the process, they cannot appreciate the many other things, the local microfauna, the birds, the topography, the beauty of the jungles. They cannot appreciate. So I had visited that Kabini resort. You might have visited. And early in the morning, the naturalist takes us to visit the various parts of the ecotourism resort. So similar experiments should be carried out, and I would appeal to all resort owners to appoint a naturalist so that he can take tourists and sensitize them as to how to appreciate nature at large. And then tiger is a part of nature, then they can appreciate. That would be a bonus if they can sight tiger. So that is the first thing I just wanted to point out, is that we have to sensitize the tourists as well as the local people that beyond tiger, a lot of things are being offered by the sanctuary and national parks or the tiger reserve that people should be in a position to appreciate. Then in that case, we can increase this ecotourism, because some people would like to see only tiger, then some would be research workers who will be carrying out research in particular species. Then the second thing is that the ecotourism is just photographic specific. Everybody wants to take photograph and publish his books, and they are satisfied with that. But I would appeal here that there are wildlife researchers and all, so they should
conduct the life cycle studies of each of these species. That is being done by some other organization like the BNHS and so on and so forth. So I would appeal that the life cycle studies of all the species should be carried on, in whichever species you are interested. So I had visited Tadoba. I have found that the Harial bird used to prefer a particular tree to sit over it. So why it is so? So which fruits they like? What is their life cycle? They should be documented. So that will be an interesting study. So that is the second appeal I just wanted. The third is that the investment of, since a lot of revenues are flowing to the resort owners or all these stakeholders in the ecotourism, that should be plowback for the habitat management of that particular area. So they should contribute. Now the focus at present is that we are empowering the local people, training them, giving them jobs and all. Yes. Besides that, you will have to invest in the habitat management of the tiger, and all these stakeholders, the public sector undertakings and all the resort owners, they should come forward to invest in the habitat management inside the park. That will have to improvise. So I think with these words, I will sign off. I wish you all the best and hope something concrete comes out of this panel discussion. And I welcome you here again in this Tadoba festival. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much indeed, sir, for that insightful and enlightening address from you on how we can improve sustainable tourism, especially at tiger reserves. And before we proceed further, I would like to invite on stage Mr. Virendra Tiwari ji, PCCF and Director Wildlife Institute of India. Thank you for joining us once again, sir. And may I now invite for his kind address Mr. Mahib Gupta, he's Principal Chief Conservator of Forest Wildlife. Over to you, sir, and let's put our hands together to welcome sir. Honorable Reddy Saab, Principal Secretary Forest, Timurnikar Saab, HOF, Maharashtra, all the other dignitaries sitting on the dais, and my dear friends. The ecotourism policy of Maharashtra came into being in 2008. The three major principles on which it was based upon was that there should be no destruction of the natural resource or the place where the tourism project is being developed. Second principle was that it should provide employment opportunities to the local people. And the third was that the people who are visiting the area should get nature education. So with these objectives, Ecotourism Board was formed in 2014. Since 2014, we have given approval to about 350 ecotourism projects, and we have provided funding also for the projects of I think 140 projects we have provided funds for, also through the state plan. Funding is provided through district schemes and other sources also, but the Ecotourism Board acts as the nodal agency for the development of ecotourism in the state of Maharashtra. Previously, there was a feeling in the forest department that the tourism should not be promoted in protected areas. There was a constant debate when we joined the service during 1990s. There was a continuous debate going on whether we should promote tourism or we should discourage it. Recently, the view has changed, I think, because now almost 15% of the forest area of the state is under protected areas. This huge land has an opportunity cost. If
if the sanctuaries or national park had not been there, then perhaps that land would have been made available to the people for agriculture, for mining, for other purposes. But we have kept them as sanctuaries and national parks. So it is a bounden duty of the Forest Department to provide employment opportunities to the local people through tourism, to compensate for the opportunity cost that is lost for the local community. So recently, we have been trying very hard to increase tourism, to invite more tourists in the protected areas also. About Tadoba, Mr. Ramgaonkar made a presentation. I think another very important park which we have in the vicinity of Nagpur is Pench. It is equally popular, equally visited by the tourists. Recently, we have developed many activities there. We started elephant safari. We started a telescope also for stargazing. We are bringing catamarans, and we are starting river safari also. Many new steps are being taken to increase the tourism potential of Pench. Similarly, many activities are being planned in Tadoba also. Another very important tourist destination in Maharashtra is SGNP, Sanjay Gandhi National Park. Through Ecotourism Board, we are not only developing new ecotourism projects, we are also trying to establish a relationship between MTDC and Ecotourism Board, private tour operators, private websites which offer tourism packages, and we want to synergize all the activities being undertaken by different people who are working in the tourism sector, and come up with a solution which is beneficial to all stakeholders. So hopefully, and we are also looking at the best practices being followed in the other states. MP Ecotourism Board is a very good, it's far ahead of us. They are doing activities which are much more popular than what Ecotourism Board of Maharashtra is doing. Similarly, Karnataka is also far ahead. They have jungle lodges, and we are also studying that model to replicate in Maharashtra. So there are a lot of opportunities, a lot needs to be done in this field, and I hope in future we'll be coming up with solutions which will be beneficial to all. With these words, I close here. Thank you very much. We'll have a good discussion afterwards, I think. Thank you very much. Thank you very much indeed, sir, for enlightening address. And now, ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome our very special guest, Mr. B. Venugopal Reddy, sir, who is the Principal Secretary Forest, Maharashtra. Let's put our hands together to welcome sir for his kind address. Namaskar, good afternoon to all of you. The distinguished guests who are on the dais, the experts and distinguished guests in the audience, and ladies and gentlemen. I'm here to basically to mention or flag some issues for the panel discussions which are going to take place. I'm not standing here to give any prescriptions, but to just to flag the issues so that all the experts who are here to participate in the panel discussions might provide us some solutions on those issues. Shri Tembur ji and Shri Mahib Gupta ji, in their speeches, they have mentioned very important points and have given some guidance also. As you all know, Tadoba festival, while it is being organized, the name is Tadoba festival, but the issues that
are associated with Tadoba festival are much more broad-based and wide-ranging. They don't limit to only Tadoba wildlife tourism or ecotourism, but the canvas is a little bigger. In fact, here what we need to keep in mind is overall development of the district also is the canvas about which we have to consider and deliberate. So I would like to list a few of the challenges that we are facing in this process. As you might have all seen yesterday, now Tadoba is being taken up at a global level. It has caught the attention at global level, and the journey has been really fantastic. It is a marvelous journey. Way back in 2000, as Collector Gadcholi, I came to visit Tadoba. That time, there were no facilities. There were nothing of a organized kind of tour which could be organized at that point in time. From a far distance, I could see a tiger, and by the time we reached there, it went into the jungle, and it was the general experience with all the people, who used to visit Tadoba that sighting is a very difficult process. Now we have reached a stage where, thanks to all the field directors and all the forest officers, PCC of wildlife, and that have worked in all these years, due to their and also a lot of NGOs and wildlife experts, due to their efforts, now we have reached a stage wherein we can confidently say that tiger sighting is almost a certainty in Tadoba. But while saying so, again I would like to not divert the focus to only tiger sighting as the objective of wildlife tourism. As Shri Tembu Mukherjee has very elaborately explained about what it should be, I don't want to get into that again. Now there comes a challenge. As he also has mentioned, we have reached a sort of saturation point vis-a-vis the number of tourists that can visit Tadoba. Then the challenge is that the end of the growth of wildlife tourism in terms of Tadoba. So now the buffer area and core area that is available, we need to come out with sort of innovative solutions to expand the concept itself and expand the scope. Here there is another point which comes up is as the population grows, now what are the areas where these animals can disperse and where they can survive or thrive, and the concomitant problems like man-animal conflict. Here comes the point for your deliberation. Can we convert this conflict into an opportunity? This is the thought I would like to leave with you. Though I'm a sort of generalist on that, but I don't have much of technical knowledge about tiger conservation or wildlife conservation and these issues. All that I would like to say is that I firmly believe that by changing the cropping patterns, by changing the livelihood patterns, the lifestyles of the people, and ecosystems improvement, there are abundant opportunities to further expand the scope and reach much higher levels. I'm sure you all must be having some thoughts on this. My request is that kindly consolidate those ideas. In my I'll be completing 3 years tenure in the department in the month of June. I attended any number of discussions, where we talk about all these principles, like changing the cropping patterns, livelihood styles, lifestyles, and all those things. But we are unable to pinpoint certain solutions, like which are those cropping patterns, which are those livelihood opportunities, which are those
lifestyles. Basically, the conflict arises because of certain lifestyles. Now, what is to be modified? Say, for instance, to quote one example, Sanjay Gandhi National Park, where there is a sizable leopard population, which is almost 100, I suppose, 80, that is the census, but I think must be more than 100, I suppose. There, in the fringes, which are just adjoining to the park, national park, you don't find much of a conflict actually. In fact, some of the encroachers, they are living well within the, notified forest, notified national park area. But still, we don't see much of a sort of, problem in terms of attacks on humans or casualties thereof. Very rarely it happens. Now, thanks to again the very devoted and dedicated forest officers who have worked with a lot of zeal to train the people to change the surrounding environments in such a way that we don't find a conflict. So here also there is a tremendous scope for that. This is what we need to think about. Then again, I'll come back to the point which I mentioned at the beginning. Now, Tadoba festival is not only to highlight the this aspect of the Tadoba which I discussed now. There is another potential which is arising in Chandrapur. That is, there are many things happening parallelly. Like one is the botanical garden, which is going to be inaugurated on 12th of March, which is again a wonderful facility which has come up for people visiting Chandrapur or Tadoba. Then there is tiger safari or wildlife safari, which is also is on the anvil, and soon it would be materializing. We have appointed an agency for preparing the detailed project report, which is almost in the final stages, which would be a sort of another global level facility which would be coming up in Chandrapur. And apart from that, there are many other things which are in the pipeline. So now, for a place like Chandrapur, which has not got its due some 2 decades back, now it is in the process of harnessing all its potential. Now, while talking about the potential, now we need to redefine the potential also. That is another challenge in front of us. So my request is that the experts to kindly offer us solutions on those things, for redefining the potential, for converting the conflict into an opportunity. This is a serious challenge, that's what we understand now. But if all the experts sit together and deliberate on that, I am sure we can come out with solutions. From a stage where we have very few tigers and it was not sort of well sought after place, we have reached a stage where it has reached the global level now. But with these thoughts, I leave these thoughts with you, and I would request that after the panel discussions, the ideas that emerge, the prescriptions that would come out of these discussions may kindly be documented in a proper manner, so that that should show the path towards the way forward to us in the days to come. So this is all I have to say, and I look forward eagerly to the outcomes of this panel discussion. And at the end, I would like to apologize for the delay in starting this panel discussions, for the reason that there was something unavoidable, and we all had to be there. So I apologize for that, and I wish all the best for the panel discussions or conference that is to happen now. Thank you. Thank you very much indeed, sir. Thank you very much indeed for highlighting the significance why the Tadoba festival was being organized. And ladies and gentlemen, I would also take a moment here to convey our gratitude to the government of Maharashtra, Tadoba Andhari Tiger Reserve, the Forest Department of Maharashtra, and the Toff Tigers for collaborating in organizing this beautiful Tadoba festival. At Tadoba festival, I would also like to explain, we have, like today, the panel discussions, tomorrow the CSR conclave, where we'll have some presentations and discussions.
Also, we have organized at the Tadoba festival the morning and afternoon safaris. All those participants, delegates who are here with us, if you wish to attend these safaris, you may kindly give your name to the organizers. And for the early risers, we have cyclothon and marathons. Today morning, the cyclothon was arranged, and tomorrow we have the marathon. Of course, the details you'll have to coordinate with the organizers to get. And all the 3 days at the Tadoba festival, beautiful cultural evenings have been curated for all our guests. Yesterday, we had Shreya Ghoshalji performing and livening up the atmosphere. Today evening, ladies and gentlemen, we would like to invite you for a beautiful Kavi Sammelan by Kumar Vishwasji and also Ricky Cage. And as we close the proceedings of this session, I would request Mr. Kale to kindly do the honors of presenting a memento, a token of gratitude, and felicitating our dignitaries present on the dais. We present to our eminent dignitary, Mr. B. Venugopal Reddy, sir, Principal Secretary, Forest, Maharashtra. Thank you, sir. Thank you very much indeed, sir. Thank you, ma'am, for gracing this occasion. And may I request all our dignitaries to kindly come forward for a group photograph. Thank you, Mr. Kale, for doing the honors. May I request everyone to kindly come forward for a group photograph. And ladies and gentlemen, we will now take a short break for lunch. May I inform all our participants that lunch is being organized in Vrindavan restaurant. As you move out, we have escorts who will guide you towards the Vrindavan restaurant. And for the kind attention of our eminent guests who are residing in the VIP and VVIP guest houses, to kindly join us for lunch in the dining area of the guest house. Once again, ladies and gentlemen, lunch for everybody is arranged at the restaurant Vrindavan. All our eminent guests who are staying at the VVIP guest house may kindly join for lunch at the VVIP guest house dining hall. And the next session will commence sharp at 2:30. I would request you all to kindly be back and seated in time for the next session. Thank you. Please enjoy your lunch and be back in time for the next session.
So the bears come to eat the wheat, and it was run over. So severe action was called for against the railways. Second was, how was a pernicious animal like a black bear on the loose and it was not collared? Okay, the reason why I'm sharing this is, when we come back to India, a country holding about 2.2% of the geographical area of the planet, holding almost 1/5 of the population, 18%, about 25% of the cattle. Yet, India is probably the country with the most spectacular species retrieval programs, and that speaks volumes of the kind of conservation heritage that we have in this country. Okay, and it's not been an easy journey. So the point that the Principal Secretary made today in his message was, can we look at a conflict not as a dead end, but put on our creative thinking hats, not just the panelists, but even the audience, and can we look at ways to challenge and go ahead, and how do you move on from there? I think that should be the governing, let's say the guiding path for the discussion today. One quick point I also recall from the message that Mr. Mahib Gupta made was, he said in Maharashtra about 15% of the area is under PAs. Not too sure whether I got the number right, but a large number. And he very firmly believed that there is an opportunity cost that the immediate neighborhood community which has lost, and we need to compensate them for that. I think that also is an important point. I would request the panelists to bear these 2 points in mind when we move forward. So let me begin with my immediate left and hand over the mic to. I found some guides here. I'm not sure whether they are comfortable with English and the language. So I think Hindi Marathi will also be a part of discussion. Many other local people are here from the villages. मराठीमध्ये चालेल सगळ्यांना? है ना? आज आपले प्रिन्सिपल सेक्रेटरी जे होते फॉरेस्टचे, त्यांनी एक पॉईंट रेज केलेला होता. त्याच्यामध्ये ह्युमन वाईल्ड लाईफ कॉन्फ्लिक्ट हे याला आपण ॲज अ चॅलेंज घेतलं पाहिजे की अपॉर्च्युनिटी घेतलं पाहिजे, हा त्यांचा मुद्दा होता महत्त्वाचा. आणि याच्यावर अनेक वर्षापासनं वनविभाग मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. आणि जेव्हापासनं टुरिझम फॉरेस्टमध्ये स्टार्ट झालं तेव्हापासनं टुरिझम डिपार्टमेंटसुद्धा याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रमोशनल ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून काम करत आहे. पण आता आम्ही प्रमोशनच्या पुढे जाऊन टुरिझम डिपार्टमेंट काय करत आहेत या प्रश्नाचं उत्तर याच्यामध्ये थोडक्यात मी देण्याचा प्रयत्न करतो. 2020मध्ये आम्ही एक पॉलिसी आणली, त्याला ॲग्री टुरिझम पॉलिसी आम्ही म्हणतो. इट इज ऑल रिलेटेड टू इको टुरिझम. तर ॲग्री टुरिझम पॉलिसीच्या माध्यमातून आम्ही जी पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित गावं आहेत, त्याच्या जवळपासची गावं आहेत, द विलेजेस नियर बाय द टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स ही जी आहेत, तर त्याच्यामध्ये आपण ॲग्री टुरिझम प्रमोशन करत असतो. व्हॉट इज ॲग्री टुरिझममध्ये थोडक्यात काय केलं जातं की जे तिथले लोकल फार्मर्स आहे, कारण आपण जर जंगलचा विचार केला या भागातला, तर मॅक्सिमम 90% ऑफ दी पॉप्युलेशन त्यांचं लाईव्हलीहूड जे आहे, त्यांचं रोजगाराचं साधन हे शेतीवर अवलंबून आहे. तर त्यामुळे शेतीशी संबंधित जर ॲक्टिव्हिटी अदर सोर्स ऑफ इन्कम जनरेट करू शकलो आपण, तर त्या माध्यमातून हा जो कॉन्फ्लिक्ट आहे हा कमी होण्यासाठी मोठा हातभार लागणार आहे. त्यामुळे ह्या पॉलिसीच्या माध्यमातून आम्ही ॲग्री टुरिझमचे सेंटर्स महाराष्ट्रामध्ये सुरू केले. आता 600च्या वर ती संख्या गेलेली आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये. एकट्या नागपूर विभागाचा जर विचार केला तर आपण 70 असे युनिट्स रजिस्टर केलेले आहेत, जे डायरेक्टरेट ऑफ टुरिझम पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत आहेत. आणि ह्या युनिट्सच्या माध्यमातून तिथे स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळत आहेत. ह्याच्यामध्ये आपण काय करत असतो, त्याच्यात बेनिफिट्स काय हे थोडक्यात सांगतो. की एखादी गोष्ट, एखादी योजना शासनाची जर आली तर त्याच्यामधनं काय फायदा होतो किंवा लोकांना त्याच्यामध्ये काय बेनिफिट्स आहेत हे कळले पाहिजेत. ते बेनिफिट्स हे आहेत की तुम्हाला कुठल्याही, जर तुम्ही एक मर्यादेपर्यंत बांधकाम करत असाल तर त्या मर्यादित बांधकामाला तुम्हाला परवानगीची गरज नाही, त्याला NA करायची गरज नाही, त्याला टाउन प्लॅनिंगची गरज नाही.
त्या व्यतिरिक्त त्याला टॅक्सेशनमधनं कम्प्लिटली वेव केलेलं आहे, त्याला कुठलंच टॅक्सेशन लागत नाही, हे एक बेनिफिट आहे. त्यानंतर त्याला इंडस्ट्रीयल रेटनी किंवा डोमेस्टिक रेटनी इलेक्ट्रिसिटीचं ते अजून डिस्कशनमध्ये आहे गव्हर्मेंट लेवलला, तो झाला तर तो एक बेनिफिट मिळणार आहे ॲडिशनल. प्लस त्या व्यतिरिक्त ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटच्या स्कीम्स असू द्यात किंवा शासनाच्या इतर विभागाच्या कोणत्याही योजना ह्या प्रायोरिटीनी त्यांना देण्यात याव्या असं सुद्धा जी आरमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे हे सगळे बेनिफिट्स आहेत. त्या व्यतिरिक्त त्यांचं प्रमोशन जे आहे ते त्यांचे ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, प्रमोशन आहे, हे सगळं आपण शासनाच्या माध्यमातून पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून करत असतो. तर असे हे बेनिफिट्स आहेत. आणि ह्या ॲग्रिटुरिझम आपले जे काही गावकरी या ठिकाणी आलेले असतील किंवा गाईड्स असतील, त्या क्षेत्राशी संबंधित काम करणारे लोक आले असतील, तर त्यांनी ज्याप्रमाणे आपण रिसॉर्ट आणि हॉटेल्स या भागामध्ये सुरू केलेले आहेत त्याला ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट लागतं. त्याचसोबतच जो स्थानिक शेतकरी आहे त्यांनीसुद्धा ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करावं, रोजगाराचं लाईव्हलीहूडचं एक पर्यायी इन्स्ट्रुमेंट म्हणून ॲग्रिटुरिझमकडे बघावं असं मी या निमित्ताने सांगतो. आणि हे जे कॉन्फ्लिक्ट आहे हे कॉन्फ्लिक्ट कमी होण्यासाठी हे एक उपयोगी साधन ठरू शकेल असं या माध्यमातून मी सांगू शकतो. त्या व्यतिरिक्त आणखी 3 पॉलिसीज आपण आणलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये ॲडव्हेंचर टुरिझम पॉलिसी आहे. ॲडव्हेंचर टुरिझम ॲक्टिव्हिटीसुद्धा तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये, तुमच्या जागेमध्ये, नियरबाय क्षेत्रामध्ये सुरू करू शकता. आणि हे सगळं इको टुरिझमच्या गाईडलाईन्सप्रमाणेच आहे. याच्यामध्ये कुठेही ह्यूज कन्स्ट्रक्शन्स नाही, ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज नाही तुम्हाला. टेम्पररी स्ट्रक्चर्समध्ये तुम्ही काम करू शकता जे फॉरेस्ट एरियाशी, त्याच्या इकॉलॉजीशी मॅच करेल अशा प्रकारचं. त्यानंतर कॅराव्हॅन टुरिझम पॉलिसी आम्ही आणलेली आहे. बीच शॅक पॉलिसी आहे. बीच शॅक पॉलिसी आपल्याकडे लागू होत नाही, ती कोस्टल एरियामध्ये लागू होते. ह्या पॉलिसी आहेत. ह्या सगळ्या पॉलिसीचा उपयोग करून आपण हे जे प्रश्न आज निर्माण झाला आहे की कॉन्फ्लिक्ट, कॅन वी टेक इट ॲज अन अपॉर्च्युनिटी? तो येस, आय एम व्हेरी शुअर that we can take it as an opportunity. We should go for these avenues which are opened by the Directorate of Tourism, and we ask our stakeholders, जे इथे स्टेकहोल्डर्स आहेत, त्या गावातली लोक आहेत, त्यांनी ह्याच्यामध्ये सहभाग घ्यायला पाहिजे आणि या माध्यमातून पर्यायी रोजगाराचं साधन नक्कीच आपल्या शेतामध्ये सुरू करायला पाहिजे असं मी विनंती करतो. थँक्यू. Let's hear Mr. Pradeep. Good afternoon. My privilege to be sitting amongst a very distinguished panel and a very distinguished and knowledgeable audience as well. Apologies, sir. I don't know Marathi. So I will try and include Hindi as much as I can. And my sincere apologies to my friends who can't follow English so easily. Thank you. Brilliant. So just 2 things first of all I wanted to say. One is that, I think when we talk about human-wildlife conflict, I think the first thing is we need to expand the canvas a little bit more. Because the moment you say conflict, there is a negative connotation to it, right? And I think conflict is part of a kind of touch point or an engagement between humans and wildlife. It's a negative instance of that happening. And it's only when you expand that canvas and bring in positive interactions also onto the same page and look at it through the same lens that you can start working on it. Because if you focus only on conflict and conflict resolution, I think you kind of get blinded. Just as, for example, when we drive on a highways and somebody's coming at you with your high beams on, if you look at the high beam straight, you can't drive. You'll have to stop. The only way we get across is to look at the side of the road. We are not looking at the problem head on. You're looking at the periphery of it and trying to find a way around it. And I think the first point is to define that situation slightly differently. So bring it onto the same canvas where we are looking at positive interactions, whether it be, retraining of guides, maybe it might be livelihood repatriation, it might be, ecotourism activities, it may be so many other things, positive interventions with or without private intervention, private participation. I think once they are seen as being on par with negative interactions with humans and wildlife, I think then we are talking about trying to do things on the positives. And it's when they are on the same canvas and we find that the positives become more than the negatives that you start addressing that problem in a more holistic manner. Just as, driving by definition is dangerous, but we don't think about what could go wrong when you could drive. We all think about what is a positive outcome of driving, that you will get somewhere.
or you need to do something or achieve something. So that's the first thing. The second thing is, in terms of defining the problem, right? Often I think, I used to be a management consultant earlier. So the first thing that we do on any project is to look at the asset situation. And defining where you are today, I think, is very, very crucial. Often we kind of tend to gloss over that and say, oh, we have a wildlife conflict problem, or we have, whatever it is. I think we need to be a little bit more specific and a little bit more detailed about that definition. Now, one of the ways we could do that, and what I've done in the past or seen in the past, is, look at it as two axes. We have humans and we have animals. Now, if you put them in two axes, in a sort of, if you picturize it in your mind, where you have humans on the vertical axis and animals on the horizontal axis. And let's say that, positive outcomes are to the left. That is, for humans, it is at the bottom of the vertical line, and for animals, it is to the left, and negatives on the other side. Now, ideally, we all want to be at the bottom left corner, where there are positive outcomes between humans and wildlife. And the problem often is that we are at the opposite corner, the top left, top right corner, where there are negative interactions for all, where there are negative interactions for humans and negative interactions or outcomes for animals also. There are other possibilities also, where there are positive outcomes for humans, but not for animals. A good example is maybe poaching or encroachment, where at least some humans are being positively benefited by that interaction, but the animals are not. And conversely, there are positions for where the animals are benefited, the humans are not. For example, where there is a overpopulation of, let's say, a carnivorous animal or a large animal, and human populations and lives are being affected. A possible example could be Wayanad at the moment, where there is a huge increase in human-wildlife conflict. People have died. 3 or 4 people have died this year in 2024 because there's a huge population of elephants and tigers who are coming out and coming into the, and because of various other factors, who are coming out into local populations, and people are dying. So there is a positive outcome there because the animals are spreading out and they have their population is increasing, but the humans are suffering. So that's not where we want to be either. So I think we need to first define where in these quadrants are we as this thing, and then the kind of remedial measures we want to take depends on where we are in which quadrant we are and where we want to move to. I think that is one of the more, let's say, structured ways of addressing or defining where we are and what we want to get to. Now, how does the private sector get into this? I think there are various methods, but I just wanted to suggest one thing. I think I was very happy to hear the talks today morning and the kind of work that is happening. I don't know how many of you have heard of conservation bonds. If you have, it's fantastic. I think it's a great way of financing conservation project. If you haven't, please do have a look at it, because I think it takes away the pain of waiting for government grants for going forward with projects. It brings in possibly investors. You could do it at a micro level as well. For example, you could get local resorts to buy conservation bonds, where their return on that bond is linked to specific metrics that happen because of conservation and local development. And the money that they have invested gets back to them at some point with a principal and the interest repayment. And the projects get funded out of the investments made out of that principal money, which is a different way of financing, and especially in micro situations where you have invested parties, such as resorts and other stakeholders locally. I think it's a possible way of financing projects here that are not multi-100 crore projects. It could be possibly used for quick, short projects or quicker projects where you have a quicker return on the timeline. I'm sure we'll have other talks that may carry on to our other. Absolutely sure. So thanks very much. Before I come to that, firstly, I think Mr. Prashanti made a point about the importance and relevance of tourism to generate spin-off economic benefits for the local community, which is the immediate set of stakeholders. And I understand you also spoke about agriculture, sustainable agriculture, how we can make it productive. Mr. Murthy made a very important point about not looking at conflict, but I'm still tempted to ask a few questions, but I guess I will do that after we hear the rest of the panelists. My request again will be, in the interest of time, rather than talk about specific interventions, we may refer to them as an example. What we need is a set of solutions. How can we make this work and happen? Aditya, so let me request you to. So I'll just take the. Yes, Good afternoon, everyone. So trying to stick to this subject without trying to digress too far away from it. When we look at the subject of coexistence, communities,
We are looking at a landscape subject, which is why I want to borrow a few thoughts from the Honorable Secretary that he put up forward today on this event. So my first, question is, India is shining bright, but, is the tiger really a success story? And I'm not talking about in terms of number. I'm talking about on a landscape level, how we manage the growth of tiger numbers. Are there conflicts? How do we manage these conflicts? How do we get local communities involved? So these are the questions that I'm trying to push forth here. So we look at India and its demands as an economy. As it grows, people are aspirational in the country. Their demands also grow. How do we look at it as a landscape level? Can tourism be part of this process? Can it contribute to the economic revival in these community landscapes? And how can we make community stakeholders, mainstreaming them into the economic model of tourism? So, borrowing from the Tadoba example, this is one of the best showcases of conservation and tourism going hand in hand. And I see a lot of the PA managers right from when we started looking at Tadoba as a landscape. I can see Kakotkar sir here, I can see Vashish sir here, they really put the foundation stones of this park together. So today we look at these figures where the park has gone from say about 10, 12 odd tigers in the 1990s to over 100 tigers today, and what happens now is that as the tiger population grows out of Tadoba and Tadoba is looked at as a nursery, this spills off into surrounding forest areas, territorial forest areas, reserve forest areas, and through corridors, spilling out to surrounding national parks as well. So this I look at as an opportunity. This can be emulated in the 950 plus wildlife landscapes that we have here. And I feel that this is an opportunity. So when Honorable Secretary says that, how do we look at communities and economics, or as Chief Wildlife Warden said, that what is the opportunity cost? Tourism is an opportunity. There is an economic benefit to that tourism. And I feel that if Tadoba model can be emulated, where communities are brought in as stakeholders, then I think we have 950 plus opportunities in India to roll this out to. Tourism will not be a panacea to every single issue, but it will help fortify the economic benefits within these communities. Again, man conflict or a new tourism opportunity. Most of these communities that live around the landscape face massive amounts of crop depredation. So crop depredation and the idea of coexistence does not really go in hand unless you bring in economic benefits to that. In the park landscape, I think tourism brings in economic benefits without being extractive. So it's one of the main businesses which is non-extractive but can compound the economic benefits. This is one of the only carnivores that is spread across almost all continents. Recently the leopard numbers have come out in Maharashtra, and Maharashtra is number 2 on the leopard population in India. So when we look at the leopard, it's surviving in urban landscapes, it's surviving in forest areas, it's surviving in croplands. So I think there is an opportunity, and like the Chief Warden said, what is the opportunity cost? I think the opportunity is there. The cost, once we come to it, we will look at it as a force multiplier for economic benefits. Here I want to also bring forward the example of a conservancy that was created by us more than 2 decades ago. Now, one of the main aspects when we talk of community conservancies, private conservancies, is that it helps expand the park habitat, allowing it to become a sink for spill-off populations of prey as well as carnivore. I think that is one of the key features of a conservancy. How we fund it, how we enable it, how do we make it stronger, how do we make it foolproof so that communities can continue to be part of the conservation landscape, how can they continue to earn money in a guaranteed way on a year-on-year basis, is how we define the structure of the conservancy. And mostly there are 2 models. One is a community-based model, one would be a private model.
When we talk of conservation, I think one of the key aspects of conservation is water. Until and unless you cannot get water in the surrounding landscape, you cannot try to rewild or regrow a forest. And that is one of the most important aspects of rewilding or conservation or creating conservancy, is the ability to bring the water table back. So here what we've tried to do is, when we first came to this landscape, it's called Chichghat Valley. The water table was around 50 feet, around 48 to 50 feet. Over a period of last 2 decades or more, we've been able to bring it up to 8 to 12 feet in the peak of summer. The advantage to the communities is that 2 kilometers downstream, all the wells have water in it. So this is the economic impact of conservation, but the benefit is directly to the communities. If there was no water, we would not be able to rewild also. So taking a leaf from the park landscape, we were able to recreate 5 different habitats. So Aditya, I'm conscious of the clock. Yeah, 5 minutes, I'll rush through it. To quickly wind up, we'll Yeah. come back to you. Sure. There are more sessions on tourism as Sure, sure. So deciduous forest, riparian forest, grasslands, wetlands, sandbars. These are the 5 habitats which we were able to recreate. Why these are important? Because they emulate the park landscape. And it is water that is able to provide us with the ability to rewild this place. Some before and after pictures of the landscape. So this is able to demonstrate rewilding based on a conservation approach through water conservation. I'll quickly go through these slides, and this is one of the most important factors. So when we do water conservation, we have downstream communities from us. So how we are able to do water conservation? We are able to also measure the amount of fish species in our ponds and streams. Then what the fish survives on zooplankton, phytoplankton. So we are able to measure the number of species of zooplankton, phytoplankton, the number of density per liter of water. And then based on that, a riparian habitat or a wetland habitat can survive. So today we have 4 nests for crocodiles. That happens because there is enough fodder for them. So a rewilding project can only survive when there is sufficient prey density. And until and unless you don't get the prey density in place, no rewilding project can survive. And that happens, the base of that is going to be water conservation. So I quickly go through some of the slides and bring it towards the end. So this is kind of the idea of what you can see in the landscape. I think the tiger is not important because tiger is pretty much present throughout the Chandrapur landscape. Most important aspect is the prey density that is available. And I'll conclude at this point. Thank you. Aditya, thank you very much. In fact, that's a brilliant example of what can be a win-win for wildlife and for the community. But before I move to Mr. Khandekar, a quick couple of points I wanted to add in this. So we open up a little more. Mr. Murthy spoke about looking at a wider canvas. He also spoke about, can we define the outcomes? If that be the case, for Mr. Ramgaonkar and his team, the objective is to look after the tigers and the entire biodiversity within the 1600 square kilometers. But as a citizen of the country, we asked me, is that the objective? I said, no, there is much more to that. Okay. Also considering that in an economy which is growing, like India's, where the share of the services sector is increasing more and more, when we look at economic opportunities for the stakeholders here, we need not be confined to this geographical landscape. We need not be confined to agriculture. We need not be confined to tourism. It can be anything. It can be working in AI, for example. It's a much longer canvas. If we look at that, then I'm sure we'll come out with some good generic solutions into which good examples can be fit. If it makes sense to all of us. So can we? Over to Mr. Khandekar. नमस्कार. मी थोडंसं मराठी, थोडंसं हिंदी, थोडंसं इंग्रजीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करीन. मी मध्य प्रदेशमधून येतो आणि तुम्हाला मागच्या वर्षीचं एक सोशल मीडियावरचा एक व्हिडिओ आठवत असेल की देवास जिल्ह्यामध्ये एक बिबट्या म्हणजे एक लेपर्ड अत्यंत संथ गतीने असा चालला होता आणि त्याच्या पाठीवर लोक बसलेली होती आणि मुलं त्याची कान खेचत होती, शेपूट खेचत होती आणि असं तो काही न करता सरळ सरळ चालला होता. आणि लोकांना आश्चर्य वाटलं की बिबट्या असा कसा वागत असेल आणि तो का अटॅक करत नाही आहे किंवा हे
जे मानव वन्यजीवन जो संघर्ष आहे त्याचं हे दुसरं उदाहरण होतं. एकीकडे आपण बघतोय की वाघ किंवा बिबट्या किंवा साप किंवा हत्ती हे मानव जीवनामध्ये संघर्ष उत्पन्न करतायत. तिथे हे उलटं होतं की तो बिबट्या जो होता तो कॅनाईन डिस्टेम्परनी ग्रसित होता आणि त्याला काही सुधरत नव्हतं आणि तो देवासच्या एका छोट्या जंगलातून बाहेर निघत असताना लोकांनी त्याच्यावर अटॅक केला आणि त्याला फारच खराब प्रकृतीने त्याला म्हणतात हाताळणी केली त्याची. मग त्याला इंदूरच्या झूमध्ये घेऊन गेले. जबलपूरचे आमचे डॉक्टर्स आले, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आले. इंदूर आणि जबलपूरच्या लोकांनी मिळून त्याची तब्येत सुधारून त्याला परत आता जंगलामध्ये पाठवण्याची व्यवस्था केली. हा चित्र तुम्हाला माहिती असेल. त्या ट्विटरवर मी स्वतः तो व्हिडिओ टाकल्यामुळे ते प्रचंड लोकांनी शिव्या घातल्या लोकांना की काय करतायत. सो वेन देर इज ए मॅन ऑन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट अँड वेन ॲनिमल्स आर सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ इल ट्रीटमेंट, there is an equal amount of response from people and citizens. So they also understand that the wildlife should not be disturbed beyond a point unless they are attacking you or in between. दुसरं उदाहरण आमच्या मध्य प्रदेशमध्ये किंवा आम्ही म्हणत असतो की गेल्या 3-4 वर्षापासून सुरू झालेलं आहे की छत्तीसगडहून, ओडिसाहून आणि त्याच्या पुढे जाऊन म्हणजे झारखंड, छत्तीसगड आणि झारखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगडमधून हत्ती मध्य प्रदेशमध्ये यायला लागलेत. So we were not trained to handle the wild elephants and they are now creating lot of problems in couple of districts near बांधवगड नॅशनल पार्क. तर आता तिथे काय करायचं याच्यासाठी 2 कमिट्यात बनल्या. आमच्या इथे 2 कमिटीज बनवल्या मध्य प्रदेश शासनाने केली. चौहान साहेब इथे बसलेले आहेत, ते तिथे जाऊन आलेत. सो द इश्यू ऑन हँड इज डेफिनेटली सिरियस इन नेचर दॅट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अँड इट इज लाईकली टू ग्रो इफ वी डोंट टॅकल इट इन डिफरंट मॅनर. लोक म्हणतात की वन्यजीव आणि वन्य प्राण्यांपासून माणसांना जो धोका आहे त्याच्यामध्ये आपण नेहमी बिबट्या, महाराष्ट्रामध्ये बिबट्या शहरात जाऊन कुत्री घेऊन जातो, लोकांच्या अटॅक करतो. किंवा आसाममध्ये बघितलं का फॉरेस्ट ऑफिसरच्या मानेवर बसलेला होता, तो फार मोठं चित्र आलं होतं. बट देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड अँड आय वुड लाईक दिस कॉन्फरन्स ऑल्सो टू लुक आफ्टर दॅट की स्नेक बाईट्सनी म्हणजे सापांच्या चावण्यानी किती लोक मरतात. देर इज अन एस्टिमेटेड फिगर ऑफ अबाउट 60,000 or so people dying annually because of the snake bites. So that is also a human-animal conflict which we are not able to really focus upon. नुसतंच आपण हत्ती किंवा वाघ किंवा बिबट्या किंवा अस्वलांच्या अटॅकनी माणसांवर हे. So what is the solution? Because Sunil was talking about solutions. So solution is definitely lies in the fact, among many other things, is that we need to create huge awareness campaigns about the dangers involved and keeping while we say that the Sunita Narayan task force on tiger also said that tiger and human have to coexist, and coexistence is being talked about everywhere. But is it possible everywhere that in case like Anuppur or Dindori or places in districts like in Madhya Pradesh where a lot of elephant movements are taking place and ते हत्ती लोकांच्या शेतांमध्ये जातात, दिवसभर उभं राहून रात्रभर उभं राहून शेतं खाऊन टाकतात, घरं तोडतायत त्यांची. अशा परिस्थितीमध्ये माणसांनी काय करावं? सो देर आर नंबर ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व्ड ॲज फार ॲज कॉन्फ्लिक्ट्स आर कन्सर्न. सो between man and tiger, between man and leopard, between man and elephant, between man and snake, and between man and many other animals. So we need to approach this problem with individually as well as we are talking about the landscape approach and things like that. आणि आता असं लक्षात यायला लागलं आहे की टुरिझम प्रचंड प्रमाणात वाढतं आहे, सगळीकडे लोक जात आहेत आणि इररिस्पॉन्सिबल टुरिझम इज ऑल्सो लीडिंग टू नंबर ऑफ थिंग. मेनी इयर्स अगो in बांधवगड one tigress was actually attacked by and her tail was pulled by a responsible or educated so-called educated tourist, and then she attacked and number of things happened after that. तर म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की मॅन इटर टायगर केव्हा होतो आहे किंवा बाकीचे अशातले जे विषय आहेत ह्याच्याकडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एकटंच जर बघितलं तर ते सोल्युशन देऊ शकणार नाही. तर आम्हाला समाजाला किंवा ज्या लोकांना वन्यजीवांबद्दल प्रेम आहे किंवा तिथे टुरिझमसाठी जाण्याची त्यांची ऐपत आहे ते बघतायत, त्या सगळ्यांनी मिळून ह्याच्याकडे एक वेगळ्या प्रकारच्या ह्यांनी बघावं लागेल. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो डुईंग ए लॉट फॉर अवॉइडिंग ह्युमन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट. मी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मॅनेजमेंटच्या बोर्डवर होतो, तिथेही आम्ही एक सेंटर सुरू केलं होतं. सो आयडिया इज टू जनरेट मोर अँड मोर अवेअरनेस फॉर एव्हरीथिंग दॅट इज पॉसिबल टू अवॉइड दी कॉन्फ्लिक्ट.
and it is not a small problem. It is not a problem which we can easily solve, but we need to have many more strategies with the help of the forest department. And I always say that conserving forest is not the responsibility only of forest department, but also all of us stakeholders who also derive benefits from forest. So we can't, as far as this topic is concerned, we can't leave foresters alone in dealing with the situation of man-animal conflict, and we all stakeholders also have to come forward. Thank you. So yes, we're talking about human-animal conflict here. So human-animal conflict, basically if you look at it, humans and animals and tigers have all coexisted for centuries in India. So the problem is not human-animal conflict. We have to look into the causes. This is just a symptom. What is the malaise? What is the disease that's causing it? I'll give you an example. We'll take you back to the beginning of the 20th century when the tigers were over 1 lakh in India and the population was about 24 crores or 28 crores. The population has grown about 5-fold, but the tiger population has come down by 97%. We are trying, Project Tiger is trying hard to get the population going, but the population, despite all the efforts today that we are making, is not going over 3,000. We've taken it over 3,000 by just reducing the age of adult tigers from 2 years to 1 year now. So I'll get back to this human-animal conflict. These nurseries that Project Tiger envisaged and initiated became tiger nurseries and animal nurseries, but the forest area shrunk. The forest area shrunk because there was a growing population, the need for development, there were more agricultural producers required, so the conflict was inevitable. But now, as our Honorable Secretary said, that this is an opportunity. Yes, this is an opportunity. This is an opportunity not only for the forest department, not only for the animals, not only for the tourism, but also for the farmers today. And we have to look at that very holistically. And I would not agree with what Mahib Gupta ji said, that Madhya Pradesh and other states are ahead of Maharashtra in terms of conservation or in terms of tiger conservation. Maharashtra, as we all know, has taken out a notification called the Community Nature Conservancies, which is essentially there to mitigate human-animal conflicts. So the idea there is, ये जो tiger था, जिसको हर किसान, हर farmer एक डेथ के रूप में देखता था, एक यमदूत के रूप में देखता था, आज उस टाइगर को हमें उस फार्मर के लिए और टूरिज्म के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए अन्नदाता बनाना है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और टूरिज्म के लिए टाइगर अन्नदाता बन गया है. ही इज द प्रोवाइडर नाउ rather than being a depriver. So the concept that the Maharashtra government has come up with is, I think, a very beautiful one. And it is this concept that 3 years back, the entire team from Madhya Pradesh, including their Honorable Forest Minister, Kumar Vijay Shah, the PCCF, the Principal Secretary Forest, the Chief Wildlife Warden, and all the field directors of all the national tiger reserves, national parks, came to Tadoba to study the Tadoba model. We are here forgetting that Tadoba is the only park with buffers which are as good as a core or better than a core in other tiger reserves in the country. So what is this Community Nature Conservancy? The farmlands adjoining because the tiger population has grown, the tigers the other animals are bound to venture out in the farmlands. The tigers or the other animals are not welcome in the farm because they are either crop raiding or behind the crop raiders. If the carnivores would come, eventually there will be human-animal conflict. A human might die, but a tiger or a wild animal will definitely die. So the concept is these degraded, depredated farmlands, we came up with a concept called the cocoon conservancies. The community-owned, community-operated nature conservancies. And how does this operate? This model is a win-win situation, provides a win-win situation for all stakeholders. The forest department, the wild animals, the tourism operators, and also the local communities, the farmers. So the degraded, depredated farmlands, the farmlands that adjoin our national parks or our tiger reserves are already degraded, depredated. They are the dark zone, also as far as the rainfalls are concerned. There's the highest number of farmer suicides. So, and as per we calculate, as per Maharashtra government own notification, a farmer in Vidarbha region earns about 10 to 15,000 rupees per annum per acre, which is not enough for sustainability for him and his family.
And over that, the ungulates come and they raid the crop. Then there's the vagaries of weather, which are the mercy of the rain gods. So the biggest loser in this entire conflict that is taking place is not the tiger. Tigers, we are producing more than our forests can hold. I told you earlier that we are struggling to keep a population of 3,000 tigers in this country. The 5,000 tigers in the country retreat. So the sufferers are the farmers. So the opportunity here is to make this tourism that we're doing here, the tiger tourism or wildlife tourism, more sustainable by making the local communities, the Kisan or the local communities, a partner in our ecotourism model. So the problem is that how do we increase more land space for tigers? The government doesn't have enough money to buy thousands of acres of land. The farmers have sentiment attachment to the land that they are already holding since generations. So how do we take this? So what we do is we ask these deeply degraded farmland owners that you come and become partners with community nature conservancies, and which is working wonderful. We started here one in Alizanda and one in Gotangao, and it's working beautifully. More and more farmers are now wanting to join this cocoon concept. Firstly, for the farmer, he's earning what? Instead of 10,000 rupees per annum that he's earning about 50,000 rupees families per month. He's not dependent on vagaries of weather. The same tiger that was considered Yamadut comes into his land, makes him more money, becomes his annadata. The depriver becomes his provider. So we have to look at the whole thing. For the forest department, once the tiger or the wild animal moves out of the protected area, who will look after it? Most of the poaching that happens, or most of the accidents that happen, most of the electrocution that happens outside the protected areas. So now the farmers, because the tiger or the wild animal is his annadata, is now a community ranger of sorts, because he wants to protect the tiger. He wants to protect the animal. The tourism people are very happy because they are giving an experience on a farmland which are joining the critical tiger habitats and getting more revenue. The tiger is more happy, the wild animal is more happy, he's got more space. Mr. Mehta, I'm conscious of the clock. Yeah, I'm just concluding it. Conclude, yes. So we have to look at these models, and Maharashtra government has already provided for it in its community nature conservancy, and which is already happening. Thank you very much. In fact, the topic that was given to us was a little wider than this, but in the time that we have, I think very difficult to come to quick conclusions on how can we. The topic is in fact is about coexistence, and in the morning, in fact, Mr. Khandekar and I were discussing. We'll have to divide the stakeholders into two different lots. One is the community which is immediately in the vicinity of a tiger reserve, let us say. The one which is facing crop raiding or livestock predation and so on, or even threat to human lives. Then there is a wider community which can even be the planetary, the rest of the 8 billion population on the globe, because this forest is generating a host of ecosystem services by way of clean air, clean water, and so on and so forth, okay, which is really not measured. So everyone has to pay some kind of a price for enjoying the benefits, and somebody who is paying a price will have to be compensated for. If we could explore solutions through these two lenses, maybe we'll be able to come out, but I think we don't have the time to do it in this particular session. But before I conclude, I thought let's also take a quick look at our esteemed audience, if there are any questions or any suggestions. Any questions for the esteemed panel, or any suggestions that you would like to make? I missed one point here. Another policy is also there, which is government of Maharashtra Tourism Department has come up with the I policy, which is a women-centric development policy for the economic development of the women entrepreneurs, especially in the tourism sector. So I would also request all the stakeholders in this area, the tourism stakeholders, to take benefit of I policy, which gives the loans, interest-free loans, or rather we, as a government department, we pay the interest for the loans up to 15 lakhs for the tourism business you're starting,
in your area especially for the women entrepreneurs. महिला ज्या आहेत पर्यटन क्षेत्रामध्ये जर काही व्यवसाय सुरू करत असतील, गाईड असू द्यात, हॉटेल असू द्यात, टूर ऑपरेटर असू द्यात, जिप्सी किंवा व्हेकल्स तुम्ही घेत असाल, अशा कुठल्याही व्यवसायासाठी जे पर्यटनाशी संबंधित आहे त्याच्यामध्ये 15 लाखापर्यंतचं जर तुम्ही कर्ज घेत असाल तर त्याचं जवळपास 4.5 लाखापर्यंतचं व्याज हे पर्यटन विभाग भरणार आहे. हा एक सोल्युशन आहे. आपण आता जे वेगवेगळ्या गोष्टी डिस्कस केल्या की याला काय सोल्युशन्स असू शकतात कॉन्फ्लिक्ट कमी करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीसाठी. कारण कॉन्फ्लिक्ट कमी करायचं म्हणजे जंगलाच्या बाहेर येऊन रोजगाराचा शोध आपल्याला घ्यावा लागेल आणि तो रोजगार निर्मिती आपण त्या क्षेत्रामध्ये करत असू तर त्याच्यासाठी काय सपोर्ट गव्हर्नमेंट देऊ शकते, त्याच्यासाठी ह्या पॉलिसीज आपल्याला कामी येणार आहेत. त्यामुळे ही सुद्धा पॉलिसी मी एक राहिली होती सांगायची. थँक्यू सुनील. Any questions? Okay, there's one there. I'm sorry, we can't reach the mic to you. Can you be louder or can we pass on the mic? सर प्रश्न नाही आहे. आपण ज्या पॉलिसीज मांडल्यात त्याबद्दलचं ऑब्झर्वेशन जे आहे ते ऑब्झर्वेशन मानतो आहे. मला असं वाटतं की 2015च्या आसपास ही पॉलिसी आपण आणली होती नेचर कन्झर्वेशनची. याची ग्रोथ जी आहे महाराष्ट्रामध्ये ज्या वेगानं व्हायला पाहिजे होते, म्हणजे पीपल सेंट्रिक अप्रोच आपण जर ठेवला जर असेल तर महाराष्ट्रभर त्या वेगानं ती होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही आहे. त्या उलट मात्र आपण पाहतोय की मायनिंग लॉबी जी आहे ही मायनिंग लॉबी इतकी मोठी झालेली आहे की अनेक गावांतून लोकांना बाहेर काढून नंतर पाहतो आपण की त्या भागात जिथे ह्या गोष्टी आधी होऊ शकल्या असत्या शेतामध्ये किंवा लोकांच्या गावामध्ये, तिथे मात्र ती आता गाव उजाडली झाले आहेत आणि मात्र पाहतो आपण की मायनिंगच्या ॲक्टिव्हिटीज त्या ठिकाणी आहेत. तर हा जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच जो आहे हा अप्रोच म्हणजे अजूनही मला वाटते की ती नीती जी आहे लोकांना माहीत नाही आहे. प्रोटेक्टेड एरियाच्या बाजूचे लोक जो असतील त्यांना ते खरंच माहिती आहे की मला शंकाच आहे जवळपास या ठिकाणी. आणि मग लोक मात्र शेती होत नाही आहेत, ते त्याला मारतात, कॉन्फ्लिक्ट सुरू आहे, पण त्यातनं काहीतरी घेता येईल हे मात्र त्यांना माहीत नसल्यामुळे जे इश्यूज जे आहेत हे इश्यूज समोर आलेले आहेत. यावर बोलवा प्लीज. Now, there are two things we have to understand that the government of India. आप जो पूछ रहे थे कि माइनिंग के ऊपर में फोकस है, तो जहाँ पे भी कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट होएगा वहाँ कंजर्वेशन ऑलवेज सेकेंड प्रायोरिटी देता है, बिकॉज इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट का राइट आप लोकल लोगों से आप नहीं ले सकते कि ये एक्सक्यूज से कि हमें कंजर्वेशन करना है इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होएगा. लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 2030 तक 30% ऑफ इंडिया नीड्स टू बी अंडर फॉरेस्ट. सो आई थिंक प्रोजेक्ट initiatives like community conservancies or private conservancies is one of the actionable ways of achieving this goal. Second is अभी अमृत धरोहर का जो स्कीम निकाला है गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे पिछले साल, that is also water conservation which is going to be beneficial to the local communities. So while we bring development into these communities, we also cannot take away the basic needs of the communities. And the tourism aspect is a way for creating sustainable development in this area. So we are not trying to debate it is development or conservation, we are trying to do both. But wherever there is precedence of development taking place, we want to ensure that the habitat is not negated anyway. I think this should answer your question. Yes, you have, and I think in the interest of time we must conclude here. Thank you very much. This was brilliant session. Thank you to each of the panelists. Thank you very much indeed. I would request you to kindly stay back. और मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री बंधु एस कुमरे जी को, जो कि एक नेचर गाइड हैं यहाँ पर तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व पे. कृपया आप मंच पर आएँ और सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान करें. एक मोमेंटो भेंट कर, एक स्मृति चिन्ह भेंट करें सभी सम्मानीय अतिथियों को. मिस्टर बंधु एस कुमरे यहाँ पर एक नेचर गाइड हैं.
Hardik Dhanyavad. Thank you. And ladies and gentlemen, a round of applause for Shri Bandhu S. Kumreji. All the nature guides are a very integral part of a wonderful experience that we have in the wildlife reserves. आपसे निवेदन है कृपया एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़े हो जाएं सर. हमारे सभी जो नेचर गाइड्स हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा जो अनुभव है वाइल्ड लाइफ का वो हमें एक बहुत ही खूबसूरती से उसे दर्शाते हैं. धन्यवाद. And ladies and gentlemen, we close the proceedings of this session and now moving towards the next session, I would request Mr. Sunil N to kindly stay back as sir is also moderating the proceedings of the next session. The next session is on sustainable wildlife tourism, conservation, community engagement and responsible travel. And of course, our moderator is Mr. Sunil N, former Director, Sustainable Banking, NatWest Group of Banks. I have the privilege in inviting our eminent panelist, Mr. M.S. Reddy, Director, Chandrapur Forest Academy. Warm welcome to you, sir. Inviting Mr. Pradeep Murthy, Director, Muddy Boots, Vacations India LLP. Warm welcome. And ladies and gentlemen, one point that I have been missing out is I would request all our delegates, speakers who are present here, distinguished dignitaries to kindly step out probably one by one, and very importantly we need your video bites, your observations, your remarks on the Tadoba festival. So we have outside video bite point where you can step outside and volunteers will guide you. Kindly give your video bites there. Thank you. And may I now invite Mr. Anurag Sharma, Director, Tigerwala. I invite Mr. Chandrasekhar Jaiswal, General Manager, MTDC, Mumbai. And ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Miss Naveli Deshmukh, Miss India 2016 and also the Tourism Youth Ambassador for the Maharashtra government. May I invite Mr. Vijay Pinjarkar, Editor, Environment and Forest, Times of India, and also Mr. Jasbir Singh Chauhan, Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, retired from Madhya Pradesh. Warm welcome to you, sir. Ladies and gentlemen, once again a very warm welcome to this enlightening session on sustainable wildlife tourism. Today we gather here So ladies and gentlemen, in this session we will explore the delicate balance between our love for wildlife and our responsibility to protect it. So I would now like to hand over to our moderator, Mr. Sunil N, who is the former Director, Sustainable Banking, NatWest Group of Groups. And so once again, I would request you to kindly conclude max in 40 to 45 minutes. Over to you, sir. Thank you. It's a very large panel and there are two very eminent speakers. Thank you, sir. Is it on? Yes, it is. So welcome to the panel. Thank you very much. The topic very clearly is sustainable wildlife tourism and not tourism alone. There was also mention and a reference to tourism as a byproduct, or let me use the word tool, and not an end in itself, but as a tool. There was a reference to conflict that was spoken of much in the previous panel. Mr. Murthy also had raised it. And I was thinking last week, the 13th summit of the World Trade Organization was happening. And probably that's the most important meeting globally, more than the UN meetings or even the nuclear talks, because that's where all trade deals are happening.
and the Secretary General spoke about the urgent need to double down on climate talks. Immediately she added, without warping free trade movement. So conflict is something that we continue to see. And the fact that we continue to fail to handle climate change as a problem that is affecting every one of us on the planet, and we still treat it as a WTO, as a negotiation. So conflict is something, part of a paradigm, it's in our mindsets. We can't really wish it away. But keeping that in mind, we still need to move forward. There are opportunities in that. So my request would be that let's look at a solution-oriented one. That's one request. Number two is, let's not confine ourselves to Tadoba alone, which is a brilliant example of conservation and a good tourism. It's a brilliant example. But let's look at the entire Indian landscape. Keeping this in view, if we share our thoughts, that will be very helpful. So let me begin this time by the other end. Dr. Chauhan, could I request to share your thoughts? Thank you, Sunilji. Sustainable, I mean, it's quite a heavy word. It is better said than done. So I would imagine that the wildlife tourism as a subset of ecotourism, it's quite. I mean, we can think of doing something towards the sustainable tourism. But sustainable to whom? I mean, whether ecologically or economically, or I mean, the tourism model of tourism in Tadoba or anywhere in Kana, Paint, anywhere could be a sustainable for the business community, or maybe say but it may have some cost on the resources there. So if you go by the definition, then sustainable, I mean, it should be economically viable, so that everybody is happy, win-win kind of a situation, and it should have virtually no impact on the resources. And I am from this old school of thought. So I mean, tourism, a big yes for tourism, but as long as it doesn't impact the conservation agenda, because we I mean, conveniently tend to compare ourselves with the South African or the East African model of tourism, where there is no comparison. They have some, say, 20,000 square kilometers of the protected areas. We have the average area in India of protected area is 250 square kilometers. There's hardly anything, any time left for experimentation. So whatever you have, you conserve it, and then maybe use for tourism. So sustainable tourism, I think there are a few essentials of sustainable tourism. As I said, it should be economically viable, but at the same time, the local communities should benefit on priority basis, and then least impact on the non-conjunctive kind of activities that we see here. And that, I think, I agree with the previous speaker that, I mean, the Tadoba doesn't have to follow any model anywhere in the country. आपकी जो कुछ भी थोड़ी बहुत आपको लगती होगी कि थोड़ी कमियां हैं, आप खुद ही सुधार सकते हैं उसको. But you have a wonderful model here, and मुझे लगता है कि आप अभी चीफ वाले वार्डन साहब भी बोल रहे थे कि वो कर्नाटका का मॉडल को स्टडी कर रहे हैं. हमें लगता है कि कर्नाटका में ठीक है, सब अच्छा है, बट ये बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है. सरकार को बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, एंड हमें
we should concentrate on conservation of the resource that we have. And of course, if we can, हम activities को diversify करें. Some kind of regulation. क्योंकि I mean, it's very heartening to see the Corbett model and the Ranthambore model. 100 rooms के से ज़्यादा के resorts हैं वहाँ पे. मतलब at least पार्क घूमने तो नहीं आएंगे उसके गेस्ट. जो 100 रूम्स रखते हों वो जस्ट एक डेस्टिनेशन मैरिजेस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसके लिए हैं. एंड आई थिंक दीज आर नॉट द प्लेसेस फॉर दोज काइंड ऑफ दिस थिंग. कॉर्बेट में पूरा एक अलोंग द कोसी रिवर द एंटायर कॉरिडोर इज ब्लॉक्ड. आई मीन बहुत ही आराम से टाइगर्स, एलिफेंट सब मूव करते थे, बट देन आज वो सब पूरा ब्लॉक्ड है. तो दैट काइंड ऑफ टूरिज्म, आई मीन वो थोड़ा सा we should refrain from promoting such tourism. अभी मैं फिलहाल इतना ही कुछ कहूँगा. Thank you, Chauhan Saab. Very important point. So I would conclude and say that very firm yes for tourism, yes, but it should be done. Now sustainability is very difficult to define. So let's say responsible to start with, which means tourism that is not extractive. It does not leave footprints which are difficult to erase. That means if the practitioners of tourism are able to do it in a manner as per the government's prescribed rules, regulations in terms of waste management, plastic management, pollution and so on, I think that's a good starting point. So should we go from this side, Reddy Saab, or should we? Okay. Just one. Thank you very much for creating a foundation for me, because most of the things you have said. So you spoke about, sir, I am with you. I am from the school of old school, and not conservative, old school. Old school is more freer and freedom. And Sunil ji, also yours, because you came to a word which is very important as a responsible. I had a very good presentation. So he has taken 7 minutes. I'll take 8 minutes because I was very calculative. No, but you will have to ration it properly. The rationing has to be proper. PDS. Okay. But you know, then if you want me to, because otherwise we can continue it tomorrow. Yeah. So this is, I have a small presentation. Okay, we skip the presentation. Can we show the video of responsible tourism here directly? Just live it up. This is what we are doing. We can stop it there. That was 1 minute. So I have 3 more minutes with you. So thank you very much. I would like to tell you, Sunil ji, you said about responsible tourism. Sustainability is a big word, and like you know, you are from NatWest and you are from sustainable banking. In fact, I would like to ask you a question. What is that all about later? Maybe in private. So because sustainable banking and what this has to do with, I don't know exactly. Thank you, but for moderating this session. I would like to tell you one very important thing, panelists, sir, like being with you, right? Responsible tourism is the key answer to everything. In community-based tourism, समुदाय आधारित पर्यटन जो ताडोबा कर रहा है और आपकी वजह से ताडोबा है. 1999 में 98 में 1998 मध्ये आम्ही आलो ताडोबामध्ये.
हा दुसरा फोरम आहे पब्लिक फोरम जिथं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि पर्यटन विभाग एक सोबत आलाय. राईट, पहिल्यांदा मी बघतोय कारण मी फॉरेस्टचा प्रोग्राम पहिल्यांदा अटेंड करतोय आणि मी फॉरेस्टमध्ये पहिल्यांदा आलोय. सो दिस इज अ बिग सक्सेस स्टोरी. आणि आता तुमच्यामुळं, तुम्ही सोल्जर आहात पर्यटनाचे, तुम्ही त्या फॉरेस्टचे सोल्जर्स आहात, त्यामुळं हे घडलंय. आणि आमचे अधिकारी वर्ग, खास करून आमचे रेड्डी साहेब, आमचे श्री काळे साहेब, आवर मिनिस्टर साहेब अँड एव्हरीबडी. इमॅजिन वन थिंग, रिमेंबर इन लाइफ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आज जो फोर्ट्स देख रहे हो तुम, रायगढ़ से लेके राजगढ़ से दौलताबाद, बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र हैज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. अगर एएसआई ने रहता था तो देयर वुड हैव बीन नथिंग. अगर फॉरेस्ट नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था. आई वुड लाइक टू टेल यू, वी शुड टेक ग्रेजुअल स्टेप्स. Sustainability is a very big issue, right? Sustainability we started in a court. जब अमिताभ बच्चन बोलते थे कोर्ट में, right? Order sustained, the word came from there and sustainability started. Let us be responsible first. If we are responsible today, we'll be sustainable tomorrow. And the responsibility is the most important part. MTDC has come up with an inclusive and all-inclusive program on responsible tourism. We are trying to train our tourists to make them. When Domino's came in India in 1999, nobody liked Domino's. Domino's re-entered India in the year 2005. Everybody liked Domino's because we never knew what a pizza was, right? Now today, MTDC is doing some work of that kind. We are trying to create a responsible tourist in you, a tourist who can do everything the best possible way. We are a leading state along with Kerala, Madhya Pradesh. We have been awarded recently at SATE as the most responsible tourism company in India, right? We have been awarded with a Scotch Award, and that has been done. So responsibility and responsible tourism is the only key, and we are building a community-based tourism through it. We are talking about, like Sir said in the last, the land parcels around the protected areas and all other places. We have something to tell you. We can engage farmers into alternative incomes. We can ask them into getting into supplementary incomes, how to get into that, right? And tourism is the answer to it. If there was no tourism, maybe perhaps this is a very broad statement from my side, but the tourism has served as a conservation tool for tiger, perhaps, right? And it is because of this that people came into the wildlife sanctuaries and protected areas and people saw tigers. But I would like to tell you the last thing. Just wait a minute, please. There is one strategy which you can adopt. This is something I wanted to give a message to Tadoba. Tadoba is the best success story in the world. I had been to many places. I go to everywhere in all. The South African game, you will be surprised to know this. This is Kare Saab, news for you. Day for yesterday, I had the South African delegation with me. You know what are they talking to MTDC? They're saying, we have big game reserve in South Africa. Can MTDC come together? Can we do something together? I said, I have my Tadoba. Why should I go to you? Right? Why should I go to you? So this is what is happening. Last word, I would like to tell you, sir. Last word, because you see, I was told to make a presentation. I am a man of very, very clear clarity, right? So I made a presentation. Okay, thank you very much. Yes, tomorrow. But yes, thank you very much. I'll take the privilege of being the host and I take another काम था, minute. नींद में से Now उठाना we are लोगों just को. hold on. हाँ. हाँ. बहुत अच्छी तरह किया आपने and wonderfully looking at that. Brilliant. I love that word responsible. But let me also add another small element to that responsible. Part of that, since you said what is sustainable banking, what is so on and so forth. Many businesses talk about giving back to the society. And I take it as in tiger reserves, the most important economic activity, leave aside mining, is tourism as an enterprise. Now, there are times when I actually think, अरे यार, tourism guide का काम इतना कितना अच्छा है, रोज tiger देखता है वो. Even I would love to do that. But of all the tourist guides who are here, I'm sure their children should have a choice. Tourist guide बनना है, न्यूयॉर्क में या दिल्ली में बैठ के कंप्यूटर का काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना. He or she should have a choice. Yeah, just want to be in the supply chain of the manufacturing of Mr. Murthy's leather, whatever that he does. There should be a choice. So where the state is stepping in to build in those capabilities, which is the responsibility of the state to do that, can the business also step in to contribute? Little bit of vocational training, facilitate somebody to go for higher education and so on, giving it back. That's the point I wanted to make. Thank you very much. Neville, over to you. First of all, a very good afternoon to one and all.
I feel honored to be part of such esteemed audience and such esteemed panel. Um, all I want to say is, when we look at our ecosystem, when we look at our wildlife, especially in India, our culture has always worshipped the nature, be it the mighty tiger that is the vehicle of goddess Durga. Our scripts and not just religion, I think in India we believe in not just worshipping, but that means that we believe in respecting the nature. It's been taught to us since ages. So sustainability and conservation shouldn't be very new to us because we've been taught since ages. We worship the god, the sun god, we worship the land, we worship our gods and goddesses. What is the message? The message is we have to live together, we have to sustain together. ये हमारा नहीं है ना उनका है, हम सबको साथ में रहना है. So sustainability has been part of our culture. This is not a new concept, according to me. And as we are marching towards development, a lot of scientific progresses have made. But at the same time, we've also advanced in pollution. We've advanced in so many things that are dangerous to our ecosystem and to our health, to our planet Earth. And how can we protect it? Sustainability is a great topic to talk about, but I personally feel as the tourism youth ambassador for the Maharashtra government, my message is of course to everyone, but especially I want to target the youngsters who love to travel, who love to explore new places, that we need to take responsibility in our own hands. We need to be individually aware and responsible about what we are doing. Let's not correct the other person. Let's not say कि ये सही नहीं है. अगर हम खुद चीज़ों को और रूल्स से चलेंगे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. और सिंपल चीज़ें करके, जैसे saying no to plastic, using the 3 R's, reuse, recycle and redo. So इन चीज़ों को अगर हम implement करें, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं उतना करें, तो ये छोटी चीज़ें हैं पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा हम सब ने अगर ये किया तो. सबसे इम्पोर्टेंट हम वाइल्ड लाइफ की और जब बढ़ते हैं, जो ताडोबा फेस्टिवल हो रहा है और वी हैव ब्यूटिफुल मॉडल. टुडे मॉर्निंग इटसेल्फ आई हैड दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सफारी. इट्स सो ब्यूटिफुल, सो अनटच्ड, बहुत ही पीसफुल लगता है सिटी से यहाँ आके. पर ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि दीज प्लेसेस आर नॉट टच्ड बाय द एडवांसमेंट्स. तो इनको एज टूरिस्ट जैसे हम वहाँ जाते हैं तो we need to be very very aware about, we are not throwing the plastics, we are not making lot of noise, because noise pollution भी एक तरीके का pollution है. We have to be very aware, जो हम कभी कभी excitement में भूल भी जाते हैं. So that's also very important for all of us to follow. And in India we have lots of rules and regulations. हमारे laws भी बहुत strict हैं. बट मेरी ये गुजारिश है ऑफिशियल से कि अगर कोई भी इलीगल चीज़ आपके सामने आती है तो स्ट्रिक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि देश में लॉज नहीं है, लॉज भरपूर है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है. अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो आई एम श्योर कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम बहुत ही जल्दी बढ़ जाएंगे. Last but not least, I want to thank everyone for having me on board. And as sir also mentioned कि एक क्या है कि एक वाइल्ड लाइफ और ताडोबा कंजर्वेशन सेंटर जो है वो अकेला नहीं है. इसमें सारे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, भले ही वो MTDC डिपार्टमेंट हो, टूरिज़म डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन एंड हाइजीन डिपार्टमेंट हो. ये अकेला नहीं बढ़ पाएगा, हम सबका ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है. तो आई जस्ट ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन ऑल द गाइड्स जो आप स्पेशली विमेन गाइड्स इतनी सारी हैं यहाँ पे, जो बहुत ही अच्छी बात है कि थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस सो वेल. एंड ताडोबा मॉडल इज़ रियली अ वर्ल्ड क्लास मॉडल और उसको
सस्टेन करना है और इंडिया के बाकी जगहों पे भी इम्प्लीमेंट करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. जय हिंद. Thank you, Naveli. So you are recommending kind of self-regulation by every citizen and enforcement of the law of the land. And would you recommend that that should be done through a process of education, starting very early, school, later on, continue into your months post-graduation and so on, a responsible citizenry? Okay, thank you very much. So let me now request Anurag to share your thoughts with us. नमस्कार. मैं इस फोरम पे शायद इंडस्ट्री बॉडी से एक या दो रिप्रेजेंटेटिव है प्रदीप. सो नॉर्मली इंडस्ट्री के बारे में स्पेशली वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इंडस्ट्री और वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर्स के बारे में सोचा जाता है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पेश करना चाहता हूँ कि जितना रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म बाकी सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है. मैं यहाँ पे टॉफ के प्रतिनिधि बैठे हैं. हम पिछले कुछ सालों से ऑलरेडी बात कर रहे हैं सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की, क्योंकि अब ये एक फैंसी वर्ड नहीं है जिसके बारे में बात करके या खुश हो जाएं और घर चले जाएं. हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशंस की सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे टॉफ के साथ में, बिकॉज बहुत सारे फॉरेन के टूर ऑपरेटर्स अब ये डिमांड करने लगे हैं कि अगर आप सस्टेनेबल या रिस्पॉन्सिबल वाइल्ड लाइफ प्रैक्टिसेस नहीं अडॉप्ट करेंगे इंडिया में आने वाले कुछ सालों में, तो हम दूसरे डेस्टिनेशंस की तरफ देखना शुरू कर देंगे. आज हम वहाँ नहीं पहुँचे पर ऑलरेडी बातचीत होने लगी है कि जैसे मैं एक टूर कंपनी ऑपरेट करता हूँ, व्हेन वी यूज़ व्हीकल्स फॉर आवर फॉरेन क्लाइंट्स, दे आस्क कि आप जो इनोवा हमको दे रहे हो क्या वो BS6 नॉर्म की है. उनको पता है कि भारत में लेटेस्ट BS6 नॉर्म है. उनको पता है कि हमको प्लास्टिक बॉटल कहीं पे भी नहीं चाहिए. वो अपना पानी का बॉटल लेकर आएंगे, अगर लंबी ट्रैवल भी तो आप 20 लीटर का जार रख दीजिए. मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रखी है कि हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ का ही काम करते हैं. सो वी ट्रैवल अक्रॉस वाइल्ड लाइफ पार्क्स. 40-48 डिग्री की गर्मी में काना भी आते हैं और तड़ोबा भी आते हैं, बट उनकी पॉलिसी दे डोंट वांट अ प्रॉपर्टी विद स्विमिंग पूल. नथिंग अगेंस्ट दैट. बट अब ये खाली एक फैंसी वर्ड नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे रियलिटी होती जा रही है. और आगे कुछ सालों में हमारे पास चॉइस नहीं बचेगी कि हम सोचें कि हमको रिस्पॉन्सिबल होना है कि नहीं, हमको ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है कि नहीं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. सिंपल इकोनॉमिक्स. इसके अलावा अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट की कि सबको होना चाहिए या सस्टेनेबल किसके लिए होना चाहिए, जैसे चौहान साहब ने राइटली कहा कि सबसे पहले जिस जगह आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए सस्टेनेबल होना चाहिए कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन नहीं हो रहा, और उसके अगर दोहन हो रहा है तो रिप्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. दूसरा बेनिफिट होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के लिए. वो बेनिफिट धीरे धीरे हो रहा है, एंड अगर हम उसको पॉजिटिवली देखें तो अगर मैं एज अ टूर ऑपरेटर आज काम करता हूं तो मेरे साथ एक मंगेश है और अनिल भाव है who are directly getting benefited here. I have a Bandu Mankad who's become from a safari driver to a tour operator and he has 3 Innovas. I'm very happy about the fact. आज यहाँ पे awareness है towards education. I know a lot of my guides in across other parts of the country have learned languages. उनको लगता है कि सर यहाँ पे अब कोरियन ग्रुप्स आने लगे हैं तो मुझे कोरियन सीख लेनी चाहिए बिकॉज एक भी कोरियन का गाइड नहीं है, या मेरे बच्चों को मैं इंग्लिश स्कूल में भेज सकता हूँ. सो ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट धीरे धीरे हो रहे हैं. ये चेंज एक दिन में नहीं होगा, बट इट इज गोइंग टू हैपन. बट व्हाट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज इज कि नॉर्मली ये लगता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या कंजर्वेशन और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, बाय द वे मैं बैंकर हूँ जिसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म अडॉप्ट किया है. सो economic benefits perspective से I'm still making less than what I used to make as a banker. But the point is कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कंजर्वेशन या लोकल लोग सब एक साथ हैं. हमेशा ये डिवाइड जो है वो खत्म हो जाना चाहिए कि हम ब्रिज के उस पार हैं और आप ब्रिज के उस पार हैं. हमारी भी रोजी यहीं से चलती है. वी आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव. वी वर टॉकिंग ओवर लंच कि ऑल दीज क्राउडेड पार्क्स टुडे हमारे लिए भी पेन पॉइंट है क्योंकि ना सफारी परमिट मिलता है और हमारे गेस्ट को सफारी एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता. वी वांट टू गो टू लेसर पार्क्स, वी वांट टू गो टू लेसर नोन पार्क्स, बट वहाँ पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. आई वॉज गिविंग एग्जाम्पल कि 2019 में मैंने अपने ग्रुप्स में नागजीरा इंट्रोड्यूस किया. लोग नहीं जानते थे. यहाँ से हम ग्रुप को माइग्रेट करते थे तड़ोबा से काना या काना से तड़ोबा, विच इज ईजिली डू वेल, मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टिल डू इट. हमने नागजीरा इंट्रोड्यूस किया. 2019 में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि पेट्रोल जिप्सी में खत्म हो जाता था या जिप्सी आधे रास्ते जंगल में बंद हो जाती थी.
वो challenges थे, but we never gave up, and also the lodges there never gave up. And एक पहले साल शायद हमको काना से बैकअप में गाड़ी मंगानी पड़ी कि जिप्सी आराम से चले, पर आई एम प्राउड टू हैप्पी से कि एक रात का नागजी रास्ते आज हमारे पास 3 रात का नागजी रास्ते हो गया, बिकॉज हमको भी वो मार्केट करने आसान होता है कि वहाँ पे भीड़ नहीं है, वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. सो वी आर मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट लेसर नोन पार्क्स एंड डेस्टिनेशन प्रोवाइडेड वी गेट सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. So I will just summarize that we are more than happy to partner, and most of the people from industry, including TOF, we have our own rating systems today of sustainable travel and responsible travel. TOF give pug ratings to tour operators and lodges, and it is kind of a mandate कि TOF के member जो हैं वो सारे के सारे वो pug rated lodges को use करेंगे. So धीरे धीरे shift is happening. It will not happen overnight, but we are moving in the right direction as an industry also. Thank you. Thank you, Anurag. Lovely listening to that. Just to respond to you and to Naveli, my friend Abhiraj Khandekar ji, who was there in the previous panel, today when he left his hotel room, he gave very clear instructions. Towel dhone ka nahi, baaki ke kapde bhi dhone ka nahi. ठीक है? That means, so I'm going to be here 2 nights. I don't want them washing every day. How much water? So there are responsible individuals. Lot depends on the way that the property also handles a tourist. Okay, and when they come in, the place where we are staying, they don't use plastic bottles. They give us bottles in a steel container. Use it and then continue to use it. So it goes on 2 ways. I just wanted to ask one quick question here. Can we, in some way, today one morning I went for the safari, for morning safari, and this is only the second time that I've come to Tadoba. I was struck by the sheer bird life around there, absolutely. If we can take away the attention completely on tiger, there's a whole lot of biodiversity and wildlife and nature to be enjoyed in Indian jungles. Can we do something about that packaging, that offering that, so that the tourist does not miss a whole lot of universe by going after the tiger alone? Tiger, of course, is the topping, completely understand that. But do you think we can do that too? Sir, हो सकता है. 2 पहलू हैं. When I started doing wildlife early 90s, 93, 94, जब हम सफारी पे जाते थे, I started my wildlife with Ranthambore, वहाँ पे नॉर्मल सफारी ड्राइवर, अगर आपको कोई साइटिंग हो गई, आसानी से होती नहीं थी पहली बार, अगर हो गई तो 5 मिनट के बाद ही यूज्ड टू से कि अच्छा टाइगर देख लिया, चलो थोड़ा आगे चलते हैं. अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि दिस सोशल मीडिया व्हिच इज डबल एजेड स्वॉर्ड एंड फेसबुक, आई कॉल इट फेक्सबुक, पीपल वांट टू प्रोजेक्ट समथिंग, एंड उसकी वजह से दिस होल फ्रेंजी ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स एंड पोस्टिंग, नथिंग अगेंस्ट इट, अवेयरनेस भी बढ़ाता है. देयर आर स्टिल पीपल हु वुड, अनफॉर्चुनेटली वी आर अ कंट्री वेयर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स आर, सो इफ लोग भारत में बाघ नहीं देखेंगे तो कहाँ देखेंगे. पर वो देखने के बाद उस एक्सपीरियंस को हम इस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं कि देयर इज more wildlife too, and work is happening. Lot of guests today don't want to see a crowded sighting. They're more than happy to go and explore once they've seen a tiger. It might not happen immediately, but it's work in progress. But yes, there's a lot more to be done and can be done. Thank you. Murthy ji, since you spoke about looking at our bigger canvas, and that applies here too, not just Tadoba alone. Okay, can we look at the entire Indian canvas? Sure. So lovely to hear from all of you, and sorry to be sitting on the stage for the second session in a row, other than Sunil. But anyway, I think see, sustainable tourism, the simplest definition, and I think in my opinion one of the best, is sustainable tourism is better places to visit and better places to live. And I think if we follow that simple adage, right, that is what it is about. And I think if we can get that as our shared maqsad, I think we'll have a long way. We are we are in a much better place. So when we say much better place to live, I think it is not only for, it means obviously that it is for the communities which live there and the wildlife which lives there. So right. So I think it kind of encompasses the fact that what you were saying, sir, around degradation of habitats is an absolute no-no. And I think that is not something that we should even be thinking about in this current day and age. And I think, for the communities, and I think maybe a lot of more focus is on the communities, because we perhaps as normal people who are not intimately involved with the forest don't see the impact that tourism sometimes has in core areas of the forest and the way it is impacting them. I think for the Aam Janta, it feels like when I see a tiger, to kya hua yaar, maine kya bigaad diya iska? Right? Maine forest ka kya bigada? Maine gaadi mein gaya to main kya ho gaya? Plastic maine leke gaya to kya ho gaya?
What's the big problem, right? So they don't understand. So I think one of the first things we have to do as a community, as a government, as an industry is to educate consumers as to what is this all about. How do they become a better customer? And I think that is something that is sorely lacking. And that is perhaps what is leading to a lot of the sadness, like sir was saying in the morning, or somebody was saying, somebody pulled the tail of a tiger, which is just idiocy. I mean, you can't even imagine. And unfortunately, down in South India, we see videos so often of roads which are going through the forest. People are getting out of their cars and they're standing away from elephants. The elephant is about 20 feet, 30 feet away, and they are standing there trying to take a photograph of the elephant, and so on and so forth. I mean, this is purely, I think, because of lack of understanding, lack of this thing. I think that's the first thing. Second thing is what you said. I was actually going to mention the same thing around expanding it to beyond the tiger, right? Yes, the tiger is an apex species, but I think we need to, again, as part of this sensitization, also tell customers that the going to the jungle, doing a safari is not seeing the tiger alone. There is so much more to this. And part of that, is, but unfortunately, again, I was talking to Nallamatu ji in the afternoon, and I was asking the same question. Why can't we make videos and films about other species and other things? He said, I've got hours and hours of footage of slender loris, but nobody wants it. Nobody wants to buy the product. Right? Nobody wants to see slender loris. I can sell tiger pictures by the dozen, but nobody wants to see this stuff. So I think that is also a thing. So I think as an industry, we need to create the demand so that maybe the slender loris or this species X or species Y also becomes a superstar, where people also want to see things and how they are happening and what's happening in their lives. I think one of the things we have done sometimes in some of the places I've worked with, we have done training courses for the local community around non-wildlife sighting products. For example, things like foraging. Taking guests out on a walk in the non-core buffer zones. You don't have to go deep into the forest. It's a short walk. Even just a couple of kilometers, you can do a beautiful foraging walk, where you're telling customers around, how do you use forest as a foraging source? We have done courses on tracking and spores, right, where you're telling customers on a half-day walk or a one-day walk, how do you track an animal? How do you do this kind of thing? I think, urban folk have no idea about these kind of things. If you can take somebody out on a day walk, you can charge a significant sum of money. These are not mass tourism products, though. I think that is one significant differentiation I would like to make. That to me, the forest is not a place to do mass tourism. It is a place to do, high value tourism for customers. Yes, I understand totally and empathize that everybody has a right to enjoy a natural heritage, and we should find ways to do that. The example, the biological park, which is being planned here, I think is a great way of doing something like that. But taking people on safaris and in large droves is, in my opinion, not the way to go. Thank you. Thank you. Thank you. Regarding this sustainable wildlife tourism, let me speak about the state of Maharashtra. In the state of Maharashtra, we have about 6 tiger reserves. Tadoba is one of them. And we have 50 sanctuaries and 6 national parks. So we have a very well spread out protected area network in the state of Maharashtra. When it comes to the India, we have more than around 50 tiger reserves. Okay. And the man-wildlife coexistence, it happens, but there is no conflict when a human being limits its own area, doesn't venture into the forest, or wild animal doesn't venture outside the forest. This negative interaction between this wildlife and humans generally happens when actually overrides his own area and enters into the other habitats. Tourism is one such initiative or activity through which we can reduce the impact of this negative interaction between the human-wildlife conflict. When tourism do happen, it gives a lot of revenue to the department, which will be given back for the conservation efforts for that particular area. By way, we are able to spend some resources for the conservation of, these important endangered species like, tiger, Asiatic lion, I am talking about the India. And when tourism is promoted, a lot of infrastructures, investment is put in the infrastructure, which also provide the money, it develops the local area. And not only that, most important is the employment opportunities which a tourism industry
will provide to the local people. Maybe by the form of the guides who are sitting here, maybe gypsy owners, drivers, some lodge workers who are working in the lodge. And also, it also get lot many stakeholders like some people who are working in the tourism industries. It has a very multiplier effect. The ecotourism, tourism and the wildlife has a very multiplier effect. Not only limited to that particular reason, even the travel industry, maybe the industry, tourism in Tadoba has a multiplier effect on the travel industry in Nagpur. Maybe the but travel by air, it is promoting many of the different kind of sector. It has a very multiplier effect. So tourism is definitely beneficial. And in the earlier presentation, they said that Tadoba has and around 12 crore rupees in a year. This is what a department earns. This is not the what actually earned. Spin-off is much more. Yeah, spin-off is much more. A tourism guide and something, the resort and something more, travel agents and tourism industry as such and much more thing. So if you see about Tadoba itself, the entire earning or economic flow is more than 300 crores, which is more than what 12 crores which has been said. Okay, and this money is not only it once again flowed back to the conservation efforts and also for the uplifting of the community there, maybe for their health and education that has been so definitely all these communities who are near the Tadoba, who are dependent for their livelihoods on this tourism, they become the well-wishers of the wildlife. They try to protect the wildlife because that is their bread earner. अन्नदाता बन जाता है उसका, अन्नदाता बनेगा तो उसके बारे में पूरा, तो we have lot many stakeholders like so similar way this tourism industry not only now limited to Tadoba, it has to spread across many protected areas which are there in Maharashtra and for that matter in India. Coming to his point, he has really said, when a traveler enters a Tadoba in a gypsy, he is moving at a speed of 20 kilometers per hour. He will tend to see only those animals which are big in nature. Maybe the tiger, some leopard, some cheetal, sambar. But he will not feel the pulse of the forest. He will not listen to the sounds of the forest. He will tend to neglect the small, trees or the grasses which are the part of this fragile ecosystem. To become a true lover of, this forest, even nature walks, they need to be promoted in addition to the general gypsy safari which is being promoted in many of the tiger reserves. Some place, I will definitely quote the example of Periyar model, where even the night, patrolling done by the forest staff, they also take along with them the tourists. So they will get a first-hand experience how the patrolling is done by the forest staff and also experience the night life of the forest. Right now the gypsy safari is only limited to the day life. We only tend to see only diurnal animals. There is much more life. Nocturnal animals are there. We never see those things. So there is a variety of tourism options which are available, which need to be explored, so that more and more people get their livelihood and the tourism industry will also prosper. But the tourism need to be responsible because the topic itself is responsible. The responsibility is, so we have to balance between the economic benefits and the ecological cost. There should be a finer balance in this. Like many of the tourism which is happening in Shimla, I don't think it is a kind of sustainable model because they are putting so many. There is no limit on the carrying capacity of the number of vehicles or the tourists who are visiting these pristine areas. So when it comes to wildlife tourism in the tiger reserve, there is a carrying capacity which has already been decided when it comes to core area. So because of this carrying capacity, we can limit this negative impacts of the tourism. At the same time, like she has already spoken about the use of the single-use plastic should not be promoted, and there should be a certain distance need to be maintained between two gypsies. There are many rules, regulations we need to be strictly followed, and not to feed the wildlife. There are many such things which need to be followed to be a responsible tourism. But see, when a traveler visits a forest area and he gets a first-hand experience about the wildlife there, so then he will become a fan of that and he become an ambassador of that wildlife. Yesterday, in the inauguration function, Ravina Tandonji she has become a fan of Tadoba, for that matter, fan of tigers. She said any birth of new cubs she knows, and she even distributes the sweets among her. That is the kind of love she generates, and she become an ambassador of this
threatened species. Like that, even the beauties from different parts of the world, they also saw a tiger and they have become fans. Now they will definitely promote this conservation in future. So we need to get more and more stakeholders to protect this fragile ecosystem. Thank you. Thank you, Mr. Reddy. I think indeed my privilege moderating this session among these stalwarts. And I thought end of the day, we all actually spoke the same language from different perspectives. So I think, taking Mr. Jaiswal's word, can we say that rather than sustainable tourism, responsible tourism to begin with? If everyone in the panel is agreeable to that, sustainability is still a long way. Okay, now the couple of points that I wanted to, Anurag raised the point of whenever you talk about tourism, it's an economic activity. Yes, of course, it's a business. And it is vulnerable to price sensitivities in 100 different ways. The promoter is worried day in, day out. What happens if a price of commodity A goes up by 0.1%? He has to deal with that. It's an enterprise. The reason why it's in the visibility so high is because of the direct impact it makes, where a particular tour operator or a set of tourists do not behave in the manner that it is in tune with a good management of a protected area. That's the reason these come. Now, much like recalling from your banking days where a credit officer, risk officer actually literally come to fisticuffs. So one way you're doing a business, you're also keeping the bank safe. Something similar has to happen here. So in conclusion, I would say tour is an important tool of conservation. We should not toss away the baby with the water. At the same time, if it is not done with a lot of responsibility and tight regulation, and it can happen to any business, whether it's a mining business, any business. If I'm doing something, if I'm producing, manufacturing my shoes here, I have absolutely no right to pollute the air and water downstream used by 100 other people out there. That's what, in conclusion, it is. Should we open the forum for any questions or suggestions from the audience or guests? Since Sapna has not given a shout on the clock, I think we have time. In Marathi also, yes. माझं नाव मनोज नळदुर्गकर कुलकर्णी. Myself Manoj Naladurgakar. I am representing Friends of Tadoba local NGO here. I would like to ask all dignitaries, particularly this entire auditorium is full with NGOs, authorities. हम लोग सब यहाँ पे आए एक मोटो के लिए, would like to develop sustainable tourism. जल, जमीन, जानवर, इन सबको साथ में लेके अगर हम लोग इको टूरिज्म अगर पॉजिटिव वे में अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमको चाहिए कि एजुकेशन अवेयरनेस इस टूरिज्म के साथ में आना चाहिए. जो टूरिस्ट हम लोग रैट रेस क्रिएट कर रहे हैं क्या टाइगर दिखाने के लिए, क्या टूरिस्ट का सिर्फ पैसा ही चाहिए हमको? वी हैव टू डिसाइड दिस फर्स्ट. हमको सिर्फ टूरिज्म का पैसा चाहिए क्या 40 करोड़ 50 करोड़ मिल रहा है? हम लोग वो पैसा लेके कंजर्वेशन में लगा रहे. मगर जो टूरिस्ट आ रहा है वो टूरिस्ट यहाँ से ताड़ोबा से जाते समय क्या लेके जा रहा है? वो नया एम्बेसडर बनना चाहिए, ताड़ोबा की सक्सेस स्टोरी ले जाना चाहिए. जो कंजर्वेशन हो रहा है, पहले चंद्रपुर में कोर के बाहर में रेगुलर फॉरेस्ट था, उसको बफर में कन्वर्ट करने के बाद एम्पावरमेंट हुआ. मेरे दोस्त लोग यहाँ पे जो गाइड लोग बैठे हैं, मैं 25 साल से TATR से रिलेटेड हूँ. इन लोगों को पहले काम नहीं था, खाली टाइम था तो उसका नॉसेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा था. आज वो प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं. दिस इज द बेस्ट इको टूरिज्म सैंपल वी आर हैविंग. मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो टूरिज्म के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट शुड बी, उससे कुछ तो भी आउटपुट निकलना चाहिए कि सिर्फ आए टूरिस्ट और चले जाए, पैसा देख के सिर्फ टाइगर देख के जाए. सर बोल रहे थे उसमें कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, कुछ फंड होना चाहिए. वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री से कोई बैठा है, कोई और मैसेज दे रहा है. मेरा कहना ये है कि मैं को पूछना चाहता हूँ वेदर हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म में एजुकेशन अवेयरनेस अमॉन्ग्स टूरिस्ट
और उससे रिलेटेड जो वो बाहर जाके हमारे लिए एम्बेसडर काम कर सकते हैं, इसलिए कुछ कर सकते हैं कैस्ट्रो में? आज आपने मेरा ही दिन बना दिया मेरे भाई, फ्रेंड्स ऑफ ताडोबा, मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए। और एक थोड़ा मौका मिला तो बोलता हूं मैं आपको कि अभी पर्यटन विभाग ने एक बहुत बड़ा विषय लिया है। आप ये जो कोइंसिडेंटली ये स्लाइड हमारी रह गई यहाँ पे, थोड़ा राइट में देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। आप थोड़ा राइट में गौर कीजिए, वो मेरा लोगो आया नया, उसको हमने सिर्फ 15 दिन पहले है ये लोगो को लॉन्च किया है, माननीय श्री गिरीश महाजन जी ने किया है। ये पहला कॉरपोरेशन है इंडिया का, पहली टूरिज्म बॉडी है इंडिया की, महाराष्ट्र की, कि जिसने कहा है रीथिंक टूरिज्म। हम लोगों को आज भी, जैसे अभी काड़े साहब ने हमको इन्वॉल्व किया है, रामगोकर साहब ने इन्वॉल्व किया है, सभी ने इन्वॉल्व किया है, हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारे पास इतने स्ट्रैटेजीज हैं। एक मैं बताऊंगा कि हम आपको ताडोबा के लिए, ताडोबा का एक फायदा बहुत है कि आपका 5 महीने या 4 महीने पार्क बंद होता है, तो यू डोंट हैव अ साइकिल ऑफ टूरिज्म विच इज रेगुलर साइकिल। सो मास टूरिज्म का सवाल ही नहीं आता है। मास टूरिज्म भी अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह से रेगुलेट करना है, राइट, उसके भी तौर तरीके बहुत ज्यादा है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, फ्रेंड्स ऑफ ताडोबा के साथ, गाइड्स के साथ और सभी मान्यवरों के साथ बैठेंगे, टॉफ्ट के साथ बैठेंगे। आप अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे, स्ट्रेटेजाइजिंग, राइट, आपने डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी करी, राइट, तो वो ही हो सकता है जो ताज के साथ हुआ है, वही ताडोबा के साथ हो सकता है। आप ताडोबा में एक टिकट रखिए 5,000 रुपए का, एक टिकट रखिए 200 रुपए का, राइट। 5,000 का टिकट जो है वो प्रीमियम टिकटिंग है। सो क्यों ना हो, आप जोनिंग कीजिए, आपके 22 गेट्स है, राइट। आप फ्रेंड्स ऑफ ताडोबा बताइए कि मोहरली गेट यही फेमस नहीं है, आप जोनिंग कर लीजिए कि मोहरली गेट विल बी क्लोज फॉर 20 डेज, ओनली दिस गेट विल बी ओपन फॉर दिस डेज, दिस इज कॉल्ड एज जोनिंग। आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉफ्ट को, फ्रेंड्स ऑफ ताडोबा को, टूर गाइड्स को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप एक विजिटर मैनेजमेंट प्लान बनाइए। एक विजिटर मैनेजमेंट प्लान ऐसा बनाइए कि जो ओनली जो एक्सपर्ट्स है वो बना सकते हैं। इसमें आपको वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स नहीं लगेंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, पर इसमें आपको यू विल बी नीडिंग पीपल हु नो अ लिटिल अबाउट टूरिज्म। आपको और एक बताना चाहता हूं मैं कि हम लोगों ने मास टूरिज्म को डाइवर्ट करने के लिए नई चीजें लाई हैं। अब टूरिज्म वो रहा नहीं जो आप टूरिज्म बोलते हैं। टूरिज्म जैसे स्पेन में, कुलकर्णी जी, स्पेन में तो टूरिज्म नहीं चाहिए, डेनमार्क में टूरिज्म नहीं चाहिए, एम्स्टर्डम में टूरिज्म नहीं होना है। हमने कॉशियस स्टेप लिए है, हम तो गोवा है ही नहीं, हम महाराष्ट्र हैं, तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि रीथिंक टूरिज्म। इसके लिए आपने जो मुद्दा उठाया है कि एजुकेशन प्रोग्राम करें, तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारतवर्ष की एक ही पहली संगठन है, टूरिज्म की संस्थान है गवर्नमेंट की, जिसने पहली बार लंदन में 6 नवंबर 2022 को रीथिंकिंग टूरिज्म ये लॉन्च किया है। और अभी हमने कल या परसों में 11 या 12 तारीख को वी आर लॉन्चिंग आवर MTDC टूरिज्म ट्रैवलर प्रोग्राम। इट्स इन फैक्ट अ कंप्लीट गाइड कि what to do and what not to do, and we have been so successful with the pilot project. You know, in Ganpatipure we started with the pilot. You'll be surprised to know people have stopped using. There are only 15% people who are using the water bottle single use plastic. वो छोड़ दीजिए, मेरा पहला रेस्टोरेंट है, पूरे रेस्टोरेंट्स देखिए, नाम रखना बहुत आसान है, गवर्नमेंट की बॉडीज का जो काम है वो बराबर रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बता रहा हूं मैं, इन MTDC रेस्टोरेंट यू मे हैव सम इश्यूज, बट MTDC रेस्टोरेंट में आप जाने के बाद एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन आपको यू विल नेवर फाइंड एनी एजिनोमोटो इन माय किचन, नो MSG, नो फूड कलर्स, नो सोया सॉस, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो emulsifiers, and that is responsible tourism, right? Number 2, MTDC में जाने के बाद you will find in tourism organizations when you go inside, we don't serve you takeaways, right? टेक अवे फूड जो है हम आपको डिस्पोजल में सर्व ही नहीं करते हैं। हमारे करीब 25 चीजें हैं, हमने वो कार्बन कैलकुलेटर भी इंप्लीमेंट कर दिया है, एवरीथिंग हैज बीन डन। सो व्हाट आई मीन टू से, द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, educating and creating mass awareness for responsible tourism has started and will do it. Thank you so much. And yes. Anurag, we are also with you. We don't want to leave you away, but you should also bring tourists, sensitize them and get them back.
Yeah, thank you, Sunil ji. Let me introduce myself. I am Kushagra Pathak, Deputy Director of the Buffer Areas of Tadoba and Dhari Tiger Reserve. I have been posted in Tadoba and Dhari for the past 1.25 years. So, I could not attend the earlier section of the debate, of the panel discussion. But जब भी मैं आया तो मैं सफारीज के बारे में मैंने बहुत सुना, टाइगर के बारे में सुना, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सुना, how to empower local communities, and Tadoba is the best successful model in the world today. But I want to give my 2 cents to this August gathering here, that regarding sustainable tourism, we have taken an initiative in the buffer areas wherein Tadoba and Dhari Tiger Reserve देश का पहला ऐसा रिजर्व है जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत हुई है सफारी के लिए. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑनलाइन बुकिंग भी होती है और आपकी चार्जिंग नॉर्मल एसी पावर प्लग या गीज़र पावर प्लग से होती है, गांव वाले कर सकते हैं, और चार्जिंग कॉस्ट सिर्फ 200 रुपये है. और अगर आप 200 रुपये भी मेंटेनेंस पर डे उसको काट लें तो 400 रुपये पर डे आपकी उसकी कॉस्ट है, और आपको 2 राउंड के 5400 रुपये मिलते हैं बफर एरिया में. तो एक दिन में अगर एक गांव वाला ओनर जो है वो 2 चक्कर लगाता है तो वो 5000 रुपये कमाता है. और यहाँ पर बफर में एग्जांपल्स हैं जो महीने के 1 लाख रुपए भी कमा चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्फत से. सेकेंड, माई पॉइंट इज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन सफारीज. वी शुड डाइवर्सिफाई टूरिज्म. आई वुड रिक्वेस्ट, यहाँ भी हमारे साथ कितने गाँव वाले हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कि आपने सर जो बोला कि हमें टूरिज्म प्लान बनाना चाहिए, उसमें हमें वाइल्ड लाइफ छोड़ करके रूरल टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म को भी प्रमोट करना चाहिए. वी शुड बी प्रमोटिंग कैंपिंग साइट्स जहाँ पे लोगों को सवारी नहीं मिल पा रही, क्योंकि कोटा तो लिमिटेड है. जाएंगे तो 125 ही गाड़ी, जाएंगे तो सुबह शाम 8 गाड़ी बफर में, तो वो उनके ऑल्टरनेटिव्स क्या है उनके पास. वी शुड डेवलप ऑल्टरनेटिव टूरिज्म, और उसमें गाँव वालों को इनिशिएटिव आगे बढ़ के लेना पड़ेगा. तो इस माध्यम से मैं सभी गाँव वालों को जो यहाँ पे मौजूद हैं कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए. एज अ डीडी बफर मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा कि आप होम स्टेज बढ़ाइए, एग्रो टूरिज्म करिए, रूरल टूरिज्म करिए. अपन प्लानिंग करके उसको आगे ले सकते हैं. धन्यवाद. So, ladies and gentlemen, thank you to all our eminent panelists here, and let's once again put our hands together. एक बार फिर जोरदार तालियां सभी हमारे माननीय वक्ताओं के लिए. और मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती शहमाज एस बेग, जो कि एक नेचर गाइड हैं, और श्रीमती गायत्री विनोदे बदाए. गलत बोला? श्रीमती गायत्री, आप और श्रीमती शहमाज, आप सभी मार्गदर्शक का काम करते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व में. एक बार जोरदार तालियां आप दोनों के लिए. आपसे निवेदन है सबसे पहले एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें. मंच पर आ जाएं प्लीज. सम्मानित करें हमारी विशिष्ट अतिथि मिस नवेली देशमुख को. हार्दिक धन्यवाद. और हमारी दोनों महिला मार्गदर्शक से निवेदन है अब एक स्मृति चिन्ह भेंट करें हमारे मॉडरेटर मिस्टर सुनील एन को. फॉर्मर डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल बैंकिंग नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ बैंक्स. सम्मानित करें मिस्टर एम एस रेड्डी जी को, डायरेक्टर चंद्रपुर फॉरेस्ट एकेडमी. धन्यवाद. आपसे निवेदन है सम्मानित करें मिस्टर प्रदीप मूर्ति जी को, डायरेक्टर मडी बूट्स वेकेशंस इंडिया एलएल. सम्मानित करना चाहेंगे हमारे वक्ता मिस्टर अनुराग शर्मा जी को, डायरेक्टर टाइगर वार्ड. सम्मानित करना चाहेंगे मिस्टर चंद्रशेखर जायसवाल जी को, जनरल मैनेजर एमटीडीसी मुंबई. मिस्टर विजय पिंजाकर, डॉक्टर मिस्टर जसबीर सिंह चौहान, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, रिटायर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश. And
And we would request all our delegates to kindly step forward and for a group photograph. आपसे भी निवेदन है, कृपया आप सबके साथ एक group photograph लें. And ladies and gentlemen, with that we close the proceedings of this enlightening session on sustainable tourism. As we move ahead to our next session, I once again take this opportunity to thank the government of Maharashtra, TATR, the Tadoba Andhari Tiger Reserve, the Forest Department of Maharashtra and the Toff Tigers for collaborating and bringing to us this wonderful Tadoba festival. So with that, we now move on to the next session, which is on wildlife safari experience and wild resorts. May I invite our distinguished moderator on stage, Mr. Rupesh Rai. He's founder and CEO, Bakri Chap Agri-Tourism and Natural Products Private Limited. Warm welcome to you, sir. I invite Mr. Nitin Kakodkar, who is the Principal Chief Conservator of Forest Wildlife, retired from Maharashtra. Sir will be presenting the Tadoba experience. So let's put our hands together to invite Mr. Nitin Kakodkar. We are honored to have with us today, as Sir will be presenting to us the Tadoba experience. Warm welcome, sir. May I also invite Mr. Virendra Tiwari ji. Warm welcome, sir. May I invite Mr. Anirudh Chau ji. He is an ecologist, naturalist, and founder of the Ran Mangali Foundation. Warm welcome. I invite Mr. Ranjit Mandal. He is from Swasara Eco Resort. And Mr. Anurag Sharma, Director Tigerwala, to once again join us on this panel. So ladies and gentlemen, this session is about enriching visitor engagement and education to the next level and balancing the conservation community and capital. So I would like to hand over to our moderator, Mr. Rupesh Rai, who has woven together his passion for nature, sustainable practices and uplifting local communities. And the Bakri Chap Agro Tourism and Natural Products Limited is not just a brand, it's a movement, a bridge between urban and natural rural traditions and innovation. When you travel with them or buy their products, you contribute to a greener, more connected world. So with those words of introduction, over to you, sir, and to carry forward the proceedings of this session. Thank you, ma'am, and I welcome all my experienced, esteemed panelists. So our topic is wildlife safari experiences and wildlife resorts. So I think enough has been already said on and you know, most of the topics, there had been a very strong overlap. You know, they can't be isolated from each other. It's like so deeply interwoven that, you know, when we talk about wildlife experiences, this wildlife safari or wildlife resort is like what sugar is to milk or what salt is to your curry or soup. I'll be quoting a lot of, you know, examples from food world while conducting this session, just to bring little, you know, fresh flavor to ongoing, you know, wildlife nomenclature and terminology, just to kind of bring little difference. So the wildlife safari, so I just wanted to do a little bit, you know, thought-provoking session. Currently, I do not have any experience of wildlife per se. I just completed a 15,000 kilometer cycle ride on a mission, solo cycle ride on a mission called Change Before Climate Change, where I went to 120 village panchayats and, you know, planted trees and appointed Prakriti Praharis or green champions. But that's the story for some other time. Now, I just wanted to kind of, you know, since you people are current contemporary wildlife, you know, stakeholders, so purely from a layman perspective, I would like to kind of, you know, pick your brain that how we can reinvent this existing
typical safari model, which the word itself is a Western concept and it's pretty fuddy-duddy. It came, the Western world brought it to Africa, East Africa to begin with, and then it was imported into countries like India, and then we created a very denatured and distorted form of safari. If you go to Africa, there are plain savanna grasslands. It's a very different kind of safari. The rangers, what we call naturalists, they also have the gun, and most of the countries, they don't need license or a very mild sort of terms to carry that license. And the sighting is a very different pattern there as compared to India. So, and again, switching back to a correlation and analogy, in 90s, when I was part of hotel industry, I have served for very long with Taj Group of Hotels and started their wildlife division called Taj Safaris, India's first branded tiger circuit. So I very categorically remember that like in hotel industry in 90s, a chef would score maximum guest service tracking, guest satisfaction tracking score. A chef who was able to, bring a distant cuisine on the table of that particular hotel. Like who serves the best Mexican or Japanese or continental. But fast forward 2020, a chef who is able to discover and explore something which is very indigenous, regional and seasonal is the one, who would, get more guest satisfaction tracking score. Also, while we talk about, swelling numbers of tourism in parks like Tadoba or, Jim Corbett, which is like a serious disaster in terms of, the what you call, man-animal conflict or, the band baja barat which happens there, a destination carrying capacity of some 5,000 people receives 25,000 people on weekend, and when there is a marriage season, the number could run in, lakhs also, putting, clubbing all the resorts together. So, is it, how can we, do we need to reinvent this whole safari concept? Do we really need to use that term safari? Again, quoting some, going back to some examples. So, sorry, I'll just finish my monologue quickly and then I will not intervene. You go to five-star hotels, still they will make that, peacock out of towel, put lot of, this cushions which are not needed, put a runner, which was like, British officers used to use because they used to go on bed with their boots on, which is redundant now. But still we are towing that thing, that's part of our, the school book of hotel management. So do we really need to tow that thing, the safari, which has been done to death? Or do we need to reinvent it? So over to you. I start with Gaurav. Gaurav, your views on it. Anurag, sorry. I'm so sorry. Well, the topic is wildlife safari experience, or I'll stick to the topic, and I have eminent panelists to talk about futuristic approach also. वाइल्ड सफारी में एक मिसकंसेप्शन है कि साइटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो एक्चुअली बहुत छोटा पार्ट है, साइटिंग हो या नहीं हो. वाइल्ड लाइफ सफारी एक्सपीरियंस, और हमको इस मानना पड़ेगा कि जो ज़्यादातर गेस्ट यहाँ पे आते हैं वो बहुत सारी फिजिकल, मॉनेटरी और इमोशनल एनर्जी खर्च करते हैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आने के लिए, और उनके लिए एक ये हॉलीडे है. बट मोस्टली वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन वो आएगा जिसको थोड़ा नेचर से प्यार होगा, जिसको वाइल्ड लाइफ से थोड़ा प्यार होगा, जो बचपन में अपने पेरेंट्स से गया होगा, साथ में किसी जंगल, और अब अपने बच्चों को लाना चाहे. तो उसने बहुत सारी फिजिकल एनर्जी खर्च कर दी है, मॉनेटरी एनर्जी खर्च कर दी है, पैसा और इमोशनल एनर्जी इस छुट्टी में. वाइल्ड लाइफ सफारी एक्सपीरियंस शुरू होता है सफारी बुकिंग से लेके रिजॉर्ट पे टाइम पे जिप्सी आने तक. उसका गाइड और ड्राइवर के साथ जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, और ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस क्या है. उसमें साइटिंग एक बहुत छोटा पार्ट होता है. मैं इसलिए बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, मंगेश मेरे साथ बैठा है साथ में, हमने बहुत यहाँ पे सवारी की है गेस्ट के साथ, और बहुत सारे बार नई साइटिंग होती, 6 में से 1 बार होती है, बट हमेशा गेस्ट खुश होकर आते हैं कि मंगेश इज एन एक्सेलेंट गाइड. एंड आई एम कोटिंग मंगेश इज एग्जाम्पल बिकॉज मंगेश वो 3.5-4 घंटे में गेस्ट को स्टोरी टेलिंग करके इंगेज रखता है. उनको बाग नहीं दिखा, पर मंगेश ने बहुत सारी चीज़ें तो बता दी, जंगल के बारे में बता दिया, अपने परिवार के बारे में बता दिया, जो यहाँ के कस्टम्स है उसके बारे में बता दिया, और 3-4 कहानी सुना दी.
सो किसी भी और एक्सपीरियंस की तरह दिस इज द स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस. हाउ यू वीव दैट स्टोरी इज वॉट इज इंपॉर्टेंट. बहुत सारे गाइड हैं, आप लोगों में भी गाइड होंगे और हम भी बहुत सारे गाइड्स के साथ गए. सुधीर इज सिटिंग हियर, आई मीन ही लिव्स वर्चुअली आउट ऑफ द जंगल लाइक मी. एंड हमको पता है कि बहुत बार ऐसी सफारियां बहुत इंजॉयबल होती है जहां साइटिंग नहीं हुई, बट वी हैव हैड अ स्टोरी टू टॉक अबाउट. So, like a English speaking course or a wildlife orientation, my suggestion would be कि एक storytelling course भी होना चाहिए, because that story is what makes or breaks that experience. And trust me, no, there are tiger-centric clients who would want to chase tigers in every safari. उनको मूंछ से लेके पूंछ तक टाइगर चाहिए. बहुत सारे लोग दूर से देख के खुश होते हैं, बहुत सारे लोग जंगल में आके भी खुश हो जाते हैं. So हम एट दिस पॉइंट इन टाइम शायद उन गेस्ट का कुछ ना कर पाए जिनको सिर्फ टाइगर ही चाहिए, पर जो गेस्ट को एक्सपीरियंस लेने के लिए आते हैं. गाड़ी हमारी समय पे आ रही है, गाइड हमारा प्रेजेंटेबल है, हंसमुख है, गेस्ट से अच्छे से इंगेज करके बात कर रहा है. थैंकफुली तड़ोबा में नहीं होता, पर किसी और पार्क में मुंह में पान मसाला है, मुंह से अल्कोहल की बदबू आ रही है, या कुछ पार्क्स का नाम मैं नहीं लूंगा, वो आते ही देखते अच्छा इंडियन गेस्ट है, मेरा बर्बाद हो गया, 100 रुपये टिप देगा. आपने वो एक्सपीरियंस खत्म कर दिया. आपने जंगल में जाके उनसे जंगल की बात की, उनको स्टोरी सुनाई, उनको और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया, और 10 में से 6, 7, 8 गेस्ट आज भी उस एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड होते हैं. 4 वो होते हैं जिनको टाइगर चाहिए, जो रिजॉर्ट का ट्रिप एडवाइजर रेटिंग भी इस बात पे देते हैं कि बाघ दिखा तो खाना अच्छा था, और मेरे अपने दोस्त के परिवार होते हैं जिनको जिस दिन टाइगर दिख जाता है उनको सब कुछ अच्छा लगता है, वरना उनके मुंह सूजे हुए होते हैं. अभी हम सबको नहीं बदल सकते, लाइक जैसे यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी, बट जो सेगमेंट है जो रियली में जंगल में इंटरेस्टेड है, क्या हम उनको वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं? कैन वी वीव दैट स्टोरी ताकि उनके बच्चे आज सुन के जाएं और 10 साल बाद वो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बने, इज व्हाट आई वांट. यस, आई एग्री कि सफारी एक्सपीरियंस इज डन टू डेथ. बार बार वही जंगल में जाके सेम 6 जीप सफारी के बजाय आज हमारे पास ऑप्शन है कि हम वॉकिंग सफारी दे सकते हैं. काना में कुछ साल पहले वॉकिंग सफारी शुरू हुई थी, बहुत सारे लोग नहीं इंटरेस्टेड होते थे, लोगों ने जाना शुरू किया, कभी पगमार्क देखने चालू हुए. आज वहाँ पे चौहान सर वुड नो, करण करके गाइड है, ही इज अ फैंटास्टिक स्टोरी टेलर. एंड वो 1-1.5 घंटे की जो बफर में वॉक होती है, वो गेस्ट को इतना एंगेज रखता है कि अब माई ग्रुप्स टेल मी कि वी वांट टू डू दैट वॉक एज एन एक्टिविटी. सो इट इज अ चेंज विच विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज हैपनिंग. बट यस, लाइक वी सेड, हमको जीप सफारी के ऑल्टरनेट सोचने पड़ेंगे. जैसे कहीं जगह बोट सफारी हो रही है, कुछ जगह वॉकिंग सफारी हो रही है, कुछ अगर और ऑप्शंस भी आते हैं. पीपल आर ऑल्सो बोर्ड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि रोज सुबह शाम जीप में बैठो, जाओ आओ करो. यस, देयर इज अ नीड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. आई एंड माय कॉन्वर्सेशन विद दैट. थैंक्स अनुराग, थैंक यू सो मच. सो आपकी बात को अगर समअप करें तो स्टोरी टेलिंग इज योर मेक और ब्रेक. जो एक आप अभी तक वाइल्ड लाइफ का एक्सपोजर देते थे, जीप में बैठा के टाइगर सेंट्रिक टूरिज्म करते थे, उसकी जगह अब समय आ चुका है कि आप कल्चर, एग्रीकल्चर, आप एंटरटेनमेंट में भी देखें, वो डॉक्यूमेंट्रीज नहीं चलती, इंफोटेनमेंट वाली डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा सक्सेस. सिर्फ एंटरटेनमेंट या सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली डॉक्यूमेंट्रीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट की तरह नहीं, इंफोटेनमेंट का जमाना है. तो कल्चर, एग्रीकल्चर सबको साथ में जोड़ते हुए, इन्वायरमेंटल इशू उसको भी साथ में जोड़ते हुए, एक होलिस्टिक आप अगर एक कथा का वाचन करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो वो शायद ज़्यादा आपका सक्सेस रेशियो होगा. वो आपको हाई वैल्यू टूरिस्ट ले आके देगा, न कि मास मार्केट टूरिज्म. ऑन दैट नोट, रंजीत, ओवर टू यू, सिंस यू रिप्रेजेंट boutique, wildlife experience product. Now just want to understand from you, जो हम लोग we are like thumping very high that tourist हमारे इन जगहों पे बढ़ रहे हैं, क्या हमारे पास में जो वो एक अप मार्केट इनबाउंड टूरिज्म आता था जो कि धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया, और एक खास आयु वर्ग विच इज नाउ नो, जिसका एक कॉलोनियल कनेक्शन था इंडिया के साथ, जो इंडिया में टाइगर टेम्पल और ताज देखने आता था, अब वो मिलेनियल और जेन जी नहीं आ रहा है इंडिया में. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि शायद हम उनके बदलते हुए टेस्ट को, वो रियलिटी शो के कंज्यूमर हैं, वो सास बहू नहीं देखते हैं, उनको बिग बॉस और डांस इंडिया चाहिए. तो क्या हम लोग ये अपने प्रोडक्ट को बदल पा रहे हैं, या एक बहुत बड़ा जो हाई पेइंग सेगमेंट है टूरिस्ट का, उसको मिस आउट कर रहे हैं, वी आर not woken up as yet? Thank you, Rupesh. Thank you everyone here. Thank you audience. देखिए,
मुझे सिर्फ ताडोबा में 14 साल हो गए. आई केम हियर इन 2010, अर्ली 2010. जो आपने कही रुपेश की वो जो हाई एंड या अप मार्केट इनबाउंड जो टूरिस्ट जो पहले आते थे, क्या वो कम हो गए हैं या वो नहीं आ रहे हैं, उसका वजह क्या हो सकता है? आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक चेंज जो मुझे लगता है जो हुआ है, डेफिनेटली डोमेस्टिक टूरिज्म काफ़ी भरा है. आप किसी भी पार्क में आप देख लीजिए, डोमेस्टिक टूरिज्म काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इनफैक्ट इनबाउंड टूरिज्म कम नहीं हुआ है. हो सकता है कि जो सेगमेंट आप ढूंढ रहे हैं शायद वो सेगमेंट अब आना कम हो गया हो और उसकी जगह किसी और सेगमेंट ने ले लिया हो, लेकिन इनबाउंड टूरिज्म भी कम नहीं हुआ है. अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि देखिए, जब मैं 2010 में जब पहली बार यहाँ आया था ताडोबा में, कुछ मतलब टूरिज्म था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टूरिज्म एकदम नहीं था. जैसे नॉर्थ ऑफ ताडोबा जहाँ पे मेरा लॉज है, वहाँ पे कुछ नहीं था. और जो थोड़े बहुत डेवलपमेंट थे वो साउथ ऑफ ताडोबा में थे. एक एमटीडीसी का रिजॉर्ट था, एक आदित्य का टाइगर ट्रेल्स था, लेकिन नॉर्थ ऑफ ताडोबा में कुछ नहीं था, जो कि विच वॉज क्वाइट एक्सेसिबल फ्रॉम नागपुर, मतलब एक्सेसिबिलिटी वाइज से काफ़ी होता. लेकिन अब वहाँ पे क्या था कि आप ग्रीड और आपका जो फोकस है उस पर आपको डिसाइड करना था कि क्या करना चाहिए यहाँ पे. देखिए, हमने जब वहाँ पे परमिशन लिया, हमें 60 रूम्स बनाने की परमिशन मिली थी. सो आई हैव ऑफिशियल अप्रूवल परमिशन टू मेक 62 रूम्स. लेकिन अब बनाने का तो हम बना लेते थे, लेकिन हमने जो डे 1 पे 12 कमरे बनाए, हमारे पास अभी 12 कमरे हैं. वी हैव नेवर इंक्रीज द नंबर ऑफ रूम्स. तो क्योंकि हमको ये था कि भाई, अब जैसे सर ने कहा था, चौहान सर ने कहा था कि देखो क्या हो रहा है कि आजकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नाम पे क्या हो रहा है, शादियां हो रही है, वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है. आर वी गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म? हम सेल क्या कर रहे हैं, हम बेच क्या रहे हैं? आई थिंक वी आर द ओनली लॉज इन एंटायर ताडोबा, हमारे पास 8 लॉज नेचुरलिस्ट हैं. सो वी जस्ट डोंट सेल कि भाई हमको टाइगर बेचना है. इट इज अबाउट द होल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिएंटेशन the moment the client comes at the lodge. See, the orientation is very much required. मेरे यहाँ पे 7:30 बजे डिनर लगता है, 9 बजे हम डिनर बंद कर देते हैं, हम नहीं खिलाते 9 बजे के बाद. आई डोंट हैव कॉन्फ्रेंस हॉल, मेरे यहाँ तमाशे नहीं होते. अच्छा, उसकी बहुत बड़ी एक यूएसपी होती है, कि वो बाद में ये जो सीरियस टूरिस्ट है उनको पता. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं या जो मतलब क्या सही है, सबके अपनी अपनी मार्केट है, सबकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन यदि हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बारे में, हम यदि वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस पे जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं वो कमर्शियल जो चिंताधारा है कि हमको बस पैसे कमाने हैं, वहाँ से हमको थोड़ा सा विल हैव टू शिफ्ट. थैंक यू रुपेश. बहुत बहुत साधुवाद आपको इस प्रकार का, इस प्रकृति का पर्यटन करने के लिए. और जो आगे चल के मतलब मेरे ख्याल में ये ऐसे रोल मॉडल्स हम सबको चाहिए जो कि सिर्फ एक कमोडिटाइज ना करें, बट उसको एक्सपीरियंस बेस बनाएं. और आने वाले समय की बहुत ही सख्त ज़रूरत है हम सबको इस चीज़ के लिए. थैंक यू. नो एंड ब्रांडिंग मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि अ ब्रांड मोर देन टेलिंग व्हाट इट इज, it should loudly, clearly and straightforward tell what it is not. Okay, so I think you are a brand in the making and all the best to you. Mr. Chao ji, आप हमारे बीच में हैं. आपने तो काफ़ी दूसरे स्टेट्स का भी आप वहाँ पे कम्युनिटीज़ को आप ट्रेन कर रहे हैं और आपके पास में एक अलग प्रकार का अनुभव होगा. आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जो अभी ये फॉर्मेट हमारा चल रहा है इसको कैसे बदलें और किस तरीके से नए सेगमेंट्स को लेके आएं, कैसे उसको लेके आएं जो कि एक टाइगर लवर नहीं है, मे बी जो उसको वाइल्ड लाइफ से कोई मतलब नहीं, उसको तो शुरू में खींचने के लिए उसको टाइगर को ही बेट बना के आपको खींचना पड़ेगा. लेकिन क्या जो टाइगर लवर है अगली बार आप उसको मैमल लवर बना सकते हैं? क्या मैमल लवर एक बार आ गया उसको अगली बार आप बर्ड लाइफ लवर बना सकते हैं? क्या बर्ड लाइफ लवर आ गया है नेक्स्ट टाइम आप उसको ग्रेजुएट कर सकते हैं टू लव इंसेक्ट्स एंड बीज एंड श्रब्स एंड ग्रास एंड बुशेस? ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच. मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा. हमारे यहाँ बहुत सारे टाइगर लवर्स हैं, उनको मैं भी डंग रोलर बीटल
जो ज़मीन पे चलता है उस पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ. I will continue from where both of these eminent speakers have left off and continue on the same lines. एक छोटा स्लाइड शो है, देखते रहिए. कहाँ करना होता है? तो जो बात चली थी कि गाइड्स आर द बैकबोन ऑफ टूरिज्म, और एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वी लुक एट गाइड्स एज आवर बेस्ट एम्बेसडर्स. आज हमें एज both of them, they could have formulated rules, but both of them will not travel with the tourists. इनके RFOs भी travel नहीं करेंगे. Who travels? Guides travel. So जो कोई philosophies हैं conservation की, protection की, guides are our ambassadors जो पर्यटकों तक उस philosophy को ले जा सकते हैं. तो क्या होता था, ये सब तो theory थी. मोहरली का जो गेट है वहाँ पे मैं जैसे ही सफारी वापस आती थी, आई वुड गो एंड स्टैंड देयर, बातें करता था पर्यटकों से. कैसे? कुछ नहीं, फालतू है. ऐसा? अच्छा, बहुत ही गंदा. ऐसा? गाइड कैसा था? फालतू गाइड, कुछ नहीं दिखाया. ऐसे आपने 4 घंटे में कुछ नहीं देखा? सर नहीं, वी डिडंट सी एनीथिंग. आई सेड दिस इज रिडिकुलस. ऐसे गाइड ने कुछ दिखाया? हाँ, कुछ तो कुत्ते थे, उछल रहे थे कुत्ते. मैडम आपने वाइल्ड डॉग्स देखे? अरे नहीं नहीं, कुत्ते उछल रहे थे और गाइड भी उछल रहा था. वो देखो कुत्ते, वो देखो कुत्ते. हम क्या बम्बई से कुत्ते देख रहे हैं? ऐसे मैडम करेक्ट, आप बम्बई से गलत जगह पे आए. से क्यों, कहाँ जाना चाहिए था? रानीची बाग भाईकला में है, केज नंबर 13 के सामने खड़े रहो, टाइगर बाहर आएगा, टाइगर देख के आप खुश रहो. तो ये जो फिलॉसफी है गाइड्स को एजुकेट करने की, ताडोबा में बहुत ही खूबसूरत रूप से सर ने स्टार्ट की थी और वो कंटिन्यू रही है. इसमें हमने कुछ रूल्स बनाए थे जो बहुत लोगों ने बहुत गालियाँ दी. तो शायद हम ऊपर जाएंगे तो पहले हमको बताना पड़ेगा कि ये ऐसे गलत चीज़ें क्या की है. सबसे पहले मोबाइल बैन कर दिया. मोबाइल कहीं पे भी पार्क में अलाउड नहीं है. अनऑफिशियली चलता होगा थोड़ा बहुत, वेरी स्मॉल, बट अदरवाइज मोबाइल्स आर बैंड. लोग कहते हैं कि हम फोटो कैसे निकालेंगे? हम कैमरा से फोटो निकालो. मोबाइल से झलाना करके एक राजस्थान में फॉरेस्ट है. आई विल कंसिडर इट टू बी द मोस्ट डेंजरस टूरिज्म. 3 जोन है, A, B, C. ए जोन में लेपर्ड साइटिंग होता है. सी जोन वाले को कॉल करके बताता है जल्दी आ. 60 to 65, 70 किलोमीटर पर आवर मिट्टी के रोड पे से गाड़ी चलती है. कभी कभार आदमी गिर सकता है, डेंजर वो कि और कोई जानवर भी मर सकता है. पर इसके अगेंस्ट हम पे प्रेशर लाया जा रहा है कि नहीं मोबाइल्स अलाउ करो. यानी मैं मेरे दोस्त को बोलूँ जल्दी आ, इधर टाइगर साइटिंग चल रहा है. सिंपल थिंग्स. ये हमने जब गाइड्स को बताया ये फिलॉसफी क्यों है, तब टूरिस्ट तक ये मैसेज बहुत इजीली जा पाया. काफ़ी विल गो फास्ट. नहीं, इतना फास्ट मत जान दो यार. तो रंजीत ने जो बताया ना, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 8 नेचुरलिस्ट फॉर द रिजॉर्ट. आज हमारे यहाँ क्या होता है कि कई जगहों पे शायद नेचुरलिस्ट मिलते नहीं होंगे. मैंने कहा यार ये हमारे गाइड्स हैं, व्हाई डोंट यू ऑल्सो हैव बेयरफुट नेचुरलिस्ट, द गाइड्स. एक बंदा है एरिक डिकुना, काना में लॉज अभी चला था, पहले नेचुरलिस्ट था. लॉट ऑफ टूरिस्ट डिड नॉट अग्री विथ वॉट एवर दैट नेम ऑफ द लॉज. उनके साथ इनकी बनती नहीं थी, बट स्टिल वो वहीं उसी लॉज में जाते थे. नॉट बिकॉज कोई स्पेशल साइटिंग देते थे, बट उस लॉज में एरिक डिकुना थे. एंड नेचुरलिस्ट एज ब्रिलियंट एज एरिक डिकुना, सब लोग वहीं पहुंचते थे. सो टुडे इनके जो नेचुरलिस्ट हैं, इनके टूरिस्ट पहले इनको फोन करके बताएंगे सो एंड सो नेचुरलिस्ट मेरे साथ भेजो. एंड दिस ऑल्सो, मैं खाली रिजॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, होम स्टेज शुड स्टार्ट वर्किंग विथ आवर गाइड्स. दैट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट. नेक्स्ट. सो वसंत सोनोले बैठे हैं वहाँ पे. वसंत जी को
वकील कहते हैं सब लोग, ये बंदा ऐसा है 4 घंटे कंटिन्यूसली आपको नॉलेज दे सकता है. Full 4 hours he'll be able to speak to you, talk about trees, talk about butterflies, talk about birds, talk about रान भाजी. रान भाजी इस मानसून में सब्जी बनती है, किस ऑल वीड्स की होती है, छोटे छोटे मानसून प्लांट्स की होती है, एंड ही स्पेशलाइजेज इन दैट. So imagine the kind of knowledge, exactly what Anurag said, these are stories that they should talk of. Shehnaz hai, Ajay Kodape hai, they are able to talk about the local lifestyle, कैसे रहते हैं. आज हम लोग चावल लाते हैं 15 दिन के लिए, चावल लाके घर में स्टोर करते हैं, 16वें दिन वापस चावल लाते हैं. यहाँ पे हमारे आदिवासी 1-1 साल के लिए चावल रखते हैं. भीवा इज देयर, सुभाष है, हमारे यहाँ लेडीज गाइड्स हैं. वी डिडंट हैव बर्डिंग गाइड्स, सो हमने जेंट्स को बुलाया, आए नहीं. लेडीज को बुलाया, हाउसवाइफ्स हैं who were only doing kapde dhona, that is chul and mool as we call it in Marathi. They can identify over 150 to 200 species of birds. Next. So exactly, making them storytellers. Do you have 3 more minutes? Thank you. So Krishna का यहाँ पे एक peacock feather होता है. So ask the tourist, why does Krishna have a peacock feather here? So beautiful, looks nice, Krishna ji pe acha dikhega. So when you think of Krishna, you think of 16,000 wives. चैन थी उसकी, ऐसा बोला जाता है. But those 16,000 women were actually widows. और हमारी हिंदू संस्कृति में उस समय इनके लिए कोई भी स्टैंडिंग नहीं था. बहुत ही खराब परिस्थिति थी. By marrying them, Krishna gave them the queen of Krishna's stature. But there was no physical desire. आज भी आप गांव में जाओ, बताएंगे कि मोर मेटिंग नहीं करते हैं. पीहन आके टीयर ड्रॉप पीती है, वो कंसीव करते हैं. That's not the truth. They're proper birds here. But these are the beliefs. So in a very simple way, male purity का साइन है वो पीकॉक फेदर. किशन जी, या गुंजा बोलते हैं, ये जो नहीं, गुंजा जो है सोना तोलते हैं, या फिर किसी का फोटो लगा के हार पहनाना है तो गुंजे का इस्तेमाल करते हैं. वेरी पॉइजनस. इसकी छोटी सुई बना के गाय भैंस को चुबा देते हैं, 5-6 दिन में गाय भैंस मर जाती है विदाउट एनी साइंस. बट यू ईट द गुंजा, इट कैन पास ऑफ नॉर्मली. आप जो पान खाते हैं, कलकत्ता मीठा पान, उसमें जो पत्ती रहती है वो गुंजा की पत्ती होती है. सो दीज आर थिंग्स दैट गाइड्स कीप टेलिंग. नेक्स्ट. एंड this is what I personally recommend to everyone. यार birds use करो. टाइगर दिखे ना दिखे, लेपर्ड दिखे ना दिखे, birds तो दिखेंगे ही. अच्छा नहीं दिख रहे क्या? सुनाई देंगे. So there are so many bird calls. I think the earlier session someone mentioned that Tadoba has such a wonderful bird life. The only additional thing that I've done for these people, I said let us start identifying bird calls. We fortunately have Sumedh Wagmare, जो YouTube पे बहुत पॉपुलर हो चुका है. सचिन क्रिकेटर जो है, उनको भी बर्ड कॉल सुना चुका है. So I said, why don't you learn bird calls? Pretty sweetie, I'll beat you. उसको वर्ड्स में डाल दो. एक आयरे, हाँ एक आयरे is Ayora. Pretty sweetie, I'll beat you is spotted babbler. So, start this. You have the cuckoos. जिसको हम पपिया बोलते हैं मध्य प्रदेश में प्यार से. मेरा पिया कहाँ? महाराष्ट्र में बोलते हैं पाउसाला, पेरतेवा. अंग्रेज साहब समर में यहाँ काम कर रहे थे, शाम को आए, नहाए, गर्म पानी था, बहुत मुश्किल जा रही थी, और रात को सो नहीं पाए. बाहर खटिया डाली 11 बजे, 12 बजे ऊपर पेड़ पे से ब्रेन फीवर. So these are like, the stories that the guides can tell you. Next. Somebody else also mentioned, why not promote the other things? So we are saying, let's promote not only the tiger, let's say, अच्छा टाइगर देखा, पर शायद ना आपने स्लॉथ बेयर नहीं देखा. आपने मगर देखे क्या? नहीं देखे.
अच्छा लेपर्ड देखा क्या? नहीं देखा. गौर देखा? हाँ गौर देखा. ओके, दैट मीन्स बिग 5, ताडोबा के बिग 5 के 2 चीजें देखी, बाकी के 3 देखने के लिए आपको वापस आना है. हमारे लॉज में ही आइए, हमारे जो नेचुरलिस्ट है वो आपको दिखा देंगे. बट बिग 5, देन देयर इज ब्यूटीफुल 5, कलरफुल 5. ट्राई एंड क्रिएट हाइप्स. जब हमारे गाइड्स को मालूम है टाइगर ऐसे किसी के कुंडली में लिख के नहीं आते हैं, पर ये गाइड बताते हैं सर आपको एक पेड़ है हमारा जो ताडोबा का टॉलेस्ट पेड़ है और वो है बीजा का पेड़, आपको दिखा दूंगे. एंड देन यू नो ही रियली अप्रिशिएट्स. और कितने लोग लगते हैं उसको हक करने के लिए. नेक्स्ट. दिस वाज इन यशदा व्हेन सम पीपल फ्रॉम शोलापुर हैड कम एंड दे सेड हमें प्रॉब्लम है वाइल्ड लाइफ का. I said क्या है? सो वी हैव ब्लैक बक जो हमारे पूरे फार्म्स में आके डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सुनील मेहता जी जो बात कर रहे थे. तो वेरी सिमिलर ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. आई सेड व्हाई डोंट यू टॉक टू दीज पीपल. जो टूरिस्ट आते हैं, स्टार्ट होस्टिंग देम आपके घर पे, छोटे से एक कमरे में, टेक देम अराउंड, घुमा के लाओ एंड लेट देम सी द ब्लैक बक्स. फंसाड़ में देयर वाज एन RFO नाइक करके, उस बंदे ने 1 RFO, हाउ मच डिफरेंस ही कैन मेक, फोटो निकालता था. एंड सब छोटे छोटे चीजों के ही फोटो निकालता था. और सबको फॉरेस्ट गार्ड थे, नॉट इवन RFO. छोटे चीजों की फोटो निकालते थे, सबको दिखाते थे. एंड फंसाड़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बर्डिंग एंड फोटोग्राफी डेस्टिनेशन. दिस इज वॉट वी कैन डू. सो वी डोंट हैव टू कंप्लेन कि हमारे पास टाइगर नहीं है, टूरिस्ट कैसे आएगा. नेक्स्ट. TATR also has some very interesting ways of telling people. The signages do not make noise. ऐसा लगता है कोई हेडमास्टर बता रहा है शोर मत करो. इंस्टेड हम कहते हैं खामोश. जले को, आई थिंक यू कैन रीड इट बेटर फ्रॉम द, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, शोर मचाने वाले को बाहर भगा देते हैं. सो शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश. और इफ यू आर थ्रोइंग प्लास्टिक अराउंड, don't throw plastic, is typically how we say. But I said, let's say it, yenna raskala, just mind it, don't throw plastic. So, you know, also communicate to the tourists in that way. Tadoba is famous during his times. His very good friend, Manohar Sapre, the crocodile wala photo, the man is trying to escape. And usme the line is very clear. Swimming in the lake prohibited, survivors will be prosecuted. Abhi, you can see the same board in Corbett also, by the way. Next. So, one reason how Tadoba improved, how the guides improved, how we improved, everything was based on feedbacks. You would be surprised to know that we came to know that we have dirty toilets after the feedback form came into existence. And then, of course, Rudy Saab also was there, and he rudely woke us up. And after that, now you should go and see the toilets in Tadoba and all the places. That's because we started listening to our tourists. Thank you so much. Thank you, Anirudh ji, for these insights and being the coach of storytellers of Tadoba and the other states also where you are working. And that's a very incredible way to address this thing, to break the monotony, infusing humor into your communication rather than making it very straight jacketed and stern. And lot to learn from you, and thank you so much. I have given you time because जो कि जैसा बताया गया कि 2 सेशंस जोड़ दिए गए हैं. एक वाइल्ड लाइफ सफारी एक्सपीरियंसेस था और एक वाइल्ड रिजॉर्ट एंड वाइल्डर एक्सपीरियंसेस. लगभग एक ही जैसे टॉपिक थे, तो उनको क्लब कर दिया गया था. तो हमारे पास समय है एंड उस समय का अच्छा सदुपयोग हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. वीरेंद्र सर, काकोटकर सर, ओवर टू यू. सॉरी, मुझे ये 2 सेशन जोड़ दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा मैं नामों के बारे में थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम है मेरे लिए चेहरे से नाम जान पाना, तो मुझे क्षमा करें. ओवर टू यू सर. आई थिंक आप ये तडोबा जंगल विभाग से ही आप बिलोंग करते हैं. एंड जो जैसा कि मैं मिस्टर निरुद्ध से सुन सकता था, काफ़ी आपके पाइनियर इनिशिएटिव्स रहे हैं यहाँ के बारे में, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं. Thank you so much. First of all, let me thank all the organizers for remembering me and
having me here. I also see Dr. Panda here. Panda Sahab, good evening. And many old friends. What I'll do is, he talked about storytelling, and I think I'll tell my story about safari. And safari wali matlab pehli safari. Can I stand up? Yes, sure. Thoda maza aata hai. So my first visit to Tadoba was sometime in '83. I had just attended a WWF camp, a nature camp in Mudumalai, and me and two of my friends, we thought that we should visit Tadoba because that was a well-known park even at that time. So we landed up without any announcement to the DCF's office in Chandrapur, and we told him that we want to go to Tadoba, and so please allow us. He said, nothing doing, you can't go to Tadoba. I said, what? We've come all the way from Mumbai and we are nature enthusiasts. So he said, nahi bhai, abhi 2 days on, the governor is visiting Tadoba and the whole thing is under renovation and you can't go, everything is stopped. So you go to Nagzira. He said, okay, we'll go to Nagzira. So since there was no alternative, we went to the bus stop of Chandrapur, bus stand, ST bus stand. एंड अच्छा ये लोग भी हैं, इनको भी समझना चाहिए. तो मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो बस स्टैंड चले गए और वहाँ देखे, वहाँ खड़े थे कि हम लोग नागजीरा की बस ढूंढेंगे और चले जाएंगे. तो वहाँ देखा एक ताड़ोबा नाम की बस, डेस्टिनेशन ताड़ोबा. सेड चलो, देन वी इंक्वायर्ड. दे सेड इस बस में बैठोगे तो आप ताड़ोबा पहुँच जाओगे, ये हॉल्टिंग से जाती है और ये कल सुबह ही वापस आएगी. तो मतलब इस बस में बैठ गए तो रात भर तो ताड़ोबा जाना ही है. सो वी गॉट इन टू दैट बस एंड वी वेंट स्ट्रेट टू ताड़ोबा. और वहाँ जाके जो वाइल्ड लाइफ वार्डन हुआ करते थे, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, तो उनके ऑफिस के सामने ही बस स्टैंड हुआ करता था जो आज कैंटीन है वहाँ. और वहाँ उतर गए, वार्डन साहब से बोले कि हम लोग तो आ गए, कल सुबह तक बस जाएगी नहीं, तो हमको तो अभी रुकने के लिए कुछ व्यवस्था करो. तो वहाँ एक डॉर्मेट्री हुआ करती थी, अभी नहीं है. There was a 4-bedded dormitory, 4 बेड की डॉर्मेट्री होती, and there was a 8-bedded dormitory and there was a 16-bedded dormitory. तो हमको 4 बेडेड डॉर्मेट्री वालों में दे दिया. हमने कहा ठीक है चलिए आइए. तो हम गए, we put our bags and came back to the canteen to eat something. We saw that the bus driver had brought some children with him. कुछ बच्चों को ले आया था वो बस वाला, तो और उनको लेके वो सफारी जाने वाला था. सफारी मतलब घुमाने ले जाने था. तो हमने उसको पूछा क्या हम आ सकते हैं आपके साथ, तो चला जाऊया, मग आम्ही पण बसलो त्या बसमध्ये, हम लोग भी बैठ गए. और वो क्या था उस बस में, दिस इज 1983, तो उस टाइम पे ये सब अलाउड था, सर्च लाइट भी अलाउड था. उस बस के ऊपर एक सर्च लाइट लेके बंदा बैठा और हम लोग वो तालाब राउंड लगा रहे थे. तालाब राउंड भी अलाउड था उस समय. और जाते जाते फिर अभी भी याद है, वी हैड अ वेरी गुड राउंड, वी सॉ लॉट ऑफ चीतल. दिस फेलो वाज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द बस विद द सर्च लाइट लेके बैठा था. और सडनली एक वाइल्ड बोर क्रॉस हो गया. तो सडनली एक वाइल्ड बोर क्रॉस होने से बस वाले ने सडनली ब्रेक लगाया. दिस फेलो फेल डाउन फ्रॉम द टॉप. फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट इंजर्ड. तो ऐसा मतलब दिस वॉज माई फर्स्ट सफारी. वो सफारी और आज सुबह की सफारी, आज सुबह भी गए सफारी में. आज अभी ताड़ोबा में वन गुड थिंग इज, अभी कैंटर बंद कर दिया, बराबर है, कैंटर बंद कर दिया एंड कुछ फोर्स के व्हीकल्स कन्वर्ट कर दिए और उसमें 4-6 सीट की जगह नाउ यू कैन अकोमोडेट 9 पीपल. अब इन्होंने भी यूज़ किया NTCA रूल्स को, या थोड़ा सा मरोड़ कैसे सकते हैं. कैंटर्स वर कंसिडर्ड एज 2 व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स. Now there is only 1 vehicle which is counted for 9 instead of 6. बरोबर है? गुड. सो थोडा अकोमोडेशन जास्ती, त्याच्यामुळे काय झालं, जास्ती गाईड्सना नोकरी मिळाली. क्षमा चाहूंगा सर, मुझे अल्टीमेटम आ चुका है, उसको अगले 5 मिनट में रैप करने खत्म करना 5 मिनट पहले. नो स्टोरी टेलिंग. नो, आई थिंक आपने बहुत अच्छी स्टोरी, आपने इतिहास के पन्नों से अतीत का दर्शन करा दिया. मैंने एक ही बोलना है, वन मोर थिंग. Again, taking forward what he was saying, na bird calls. Yeah.
तो और एक बर्ड कॉल बता दूं मैं? नहीं बिल्कुल बताइए सर, क्योंकि इन्होंने अपना आपको मेरे टाइम समय दे दे दिया दिया है आपको, तो आप इनके समय को यूज कर सकते हैं। तो एक मजेदार बर्ड कॉल है, मेरे बहुत सारे दोस्त जानते होंगे उसको। Did you do काका it? काकू, त्याला जे लोक दारू पित नाहीत ते काय म्हणतात? ब्रोकन बॉटल. आणि ज्यांना दारू प्यायची असते ते काय म्हणतात? वन मोर बॉटल. सो दॅट इज हाऊ व्हॉट ही वॉज मेन्शनिंग, स्टोरी टेलिंग. हे फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि किती म्हटलं, टायगर टुरिझम जेव्हा लोक येतात, तुम्ही मला कितीही सांगा, पण वाघ बघितल्याशिवाय लोकांचं सॅटिस्फॅक्शन होत नाही, हे बरोबर आहे. पण ॲट द सेम टाईम वी शुड रिअलाइज दॅट खूप गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. आणि एक चांगली गोष्ट जी आज सकाळी मी अनुभवली ती ही, की आमचा गाईड फक्त टायगरसाठी बघत नव्हता, तो आऊल शोधत होता, तो व्हाईट आईड बझर्ड शोधत होता. तो सडनली सांबर एकदम खूप सारे दिसले एकत्र, तो वो रुक गया, बोला ये देखिए. बाम्बू फ्लावरिंग के बारे में उसने बताया. तो ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हुआ है, चेंज बहुत हुआ है. इसको और थोड़ा आगे ले जाएंगे, और ऐसा द सक्सेस विल बी व्हेन यू रीच अ सिच्युएशन की आम्हाला बाकी गोष्टी सांगा. आता आपण पूर्वी ताडोबाला इंटरप्रिटेशनच्या खूप गोष्टी केल्या, तर त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्ही अजूनही, फायरलाईन म्हणजे काय, फ्लावरिंग म्हणजे काय, टर्माइट माउंड म्हणजे काय, वाळवीचं काय आहे, हाईड म्हणजे काय, मचान म्हणजे काय, कशासाठी वापरली जाते, खूप 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 गोष्टी आहेत. सो यू ट्राय टू डेव्हलप दॅट. आणि ते जर केलं तुम्ही, तर मला नक्की खात्री आहे की थोडंसं डायव्हर्शन होईल. मी अजूनही म्हणतो की पूर्ण डायव्हर्शन होणार नाही. आजही सॅटिस्फॅक्शन नसतं. लोक वाघ बघायला येतात, त्यांना वाघच बघायचा असतो. पण हळूहळू, दिस इज अ प्रोसेस, हळूहळू प्रोसेस होणार. आणि नंतर आता बाकी ठिकाणी कुठे वाघ है, जहाँ टाइगर नहीं है वहाँ तो दूसरी चीज़ें देखते हैं ना. करनाला में मैं था तो वहाँ तो बर्ड्स थी सिर्फ, वहाँ तो कोई और ऑप्शन नहीं है. यूके का आधा सबसे ज़्यादा टूरिज्म किस पे चलता है? वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बर्ड्स पे चलता है, बिकॉज देर इज नथिंग एल्स. बट वी हैव एवरीथिंग, बट विदिन दॅट अगेन वी हॅव टू सर्च आणि बघायला पाहिजे युनिकनेस. आणि ते जर करता आलं तर मला वाटतं तुम्ही खूप सक्सेसफुल व्हाल आणि ताडोबाला अजून पुढे न्याल. कारण टाइगर बघून आता खूप लोक असे आहेत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 2 और 3 सफारी नहीं, कुछ लोग 10-10 सफारी, 15-15 सफारीज बुक करके आते हैं. वो लोग क्या सिर्फ टाइगर देखने नहीं आ रहे. रिसोर्ट ओनर्स विल एग्री विथ मी that they are not coming for 2 days, 3 days. They say we'll book 15 safaris. I came across one person जिसने 22 सफारी बुक करी थी. Okay, so 51 safaris. I'll just end with one small story of मेलघाट. मेलघाट में जब मैं था तो उधर परतवाड़ा में हमारा एक ऑफिस है, तो वहाँ एक फॉरेनर आया हुआ था. तो उसको मैंने बोला कि आप व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप क्यों आए इधर? तो बोला मैं एक उल्लू देखने आया हूँ. तो मैंने कहा उल्लू देखने आया, ठीक है. अब पूरी दुनिया जो है वो टाइगर देखने आती है, मेलघाट का जंगल देखने आती है. तो हमने कहा ठीक है, इफ़ यू आर सो कीन, मैं तुमको बताता हूँ कहाँ जाना है. तो मैंने उसको, वो मुझे बोल रहा है कि हमको मालूम है, आई नो वेयर टू गो, आई हैव टू गो टू चौराकुंड. चौराकुंड एक जगह है जहाँ हमारा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है. तो बोले हम चौराकुंड जाएंगे. तो चौराकुंड जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि चौराकुंड में आपको उल्लू कौन दिखा सकता है. दिस इज विच उल्लू? फॉरेस्ट आउलेट, डूडा बोलते हैं उधर लोकली. तो मैंने कहा कि मैं बताता हूँ आपको. तो बोले नहीं नहीं, आई नो, उसका नाम है फालतू काजदेकर. और आपके लैंग्वेज में फालतू मीन्स यूजलेस, ये भी उसको मालूम है. यूके से आया हुआ बंदा है. तो ऐसा नहीं है. वी हैड वन मजूर जिसका नाम फालतू काजदेकर. ही वॉज अ कोरकू ट्राइब, कोरकू होता तो ही वॉज एन एक्सपर्ट इन इमिटेटिंग द बर्ड कॉल ऑफ डूडा. और उसके रिस्पॉन्स में उसको पता चलता कि इस ट्री पे है. मैंने भी टेस्ट किया उसको. तो ये ऐसा नहीं है कि लोग बाकी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है. अब अगर आदमी यूके से यहाँ एक डूडा के लिए आता है और ये इन्फॉर्मेशन निकाल के आता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है,
तो उससे इंटरेस्ट कितना होता है लोगों को, ये आपको बताना था. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank you, Mr. Kakotkar, for such a wonderful insights about Tadoba. It was very informative, entertaining also at the same time. तो अभी तक जो दो बातें बहुत क्लियर कट निकल के आई, एक तो स्टोरी टेलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तरह के सस्टेनेबल या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने का, और दूसरा जो बॉटम ऑफ द पिरामिड क्रीचर्स हैं, जो आपके इंसेक्ट्स, बर्ड, बीज, बटरफ्लाइज, आई थिंक अब समय आ चुका है कि उनका हम महिमा मंडन करें. जैसे कुजीन्स के बारे में बता रहा था कि जो आपकी लोकल कुजीन है वो पॉपुलर अब हो रही हैं, कुछ दूसरी जगह जाके नहीं, बट अपनी जगह पे अगर कोई होटल है तो वो पॉपुलर हो रही हैं. तो उसी प्रकार से जो आपका इंडिजीनियस है, नेटिव है, आपका मौलिक है, चाहे वो कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फूड हो, या आपका स्पीशीज़ हो, वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस हो, तो फोकस अपनी जड़ों पे लेके आने का समय आ चुका है, न कि दूर की चीज़ को देख के दूर के डोल सुहावने होते हैं उस पर फोकस करने का. सर आप वीरेंद्र सर आप बच गए हैं, आप कुछ दो शब्द अपने बोलें और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे क्योंकि एक सेशन और बचा हुआ है. खैर काकोडकर साहब के बोलने के बाद बहुत कुछ बचा नहीं है, सिर्फ दो तीन चीज़ें. काफ़ी करीब 10 साल में मैं देख रहा हूँ बहुत प्रगति हुई है. एक चीज़ जो सबसे अच्छा हुआ है जो आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन बंद हो गया है. ये उस समय भी मुझे लगता था कि ये एक्चुअली जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, एक्सपीरियंस लोग ले ही कहाँ रहे हैं आजकल. आप जंगल में जाते हैं, अगर वहाँ नेटवर्क होता है तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, आप फ़ोटो सेल्फी में बिज़ी रहते हैं. और ये तो या तो जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो अपने फ़ोटोज़ में रहते हैं. तो हम लोग आज इनफैक्ट कल श्रेया घोषाल के शो में भी मतलब गाने सुनने में कम लोग और सेल्फी लेने में ज़्यादा लोग विश्वास, या फ़ोटो खींचने में ज़्यादा लोग विश्वास रखते हैं. तो एक तो इसकी वजह से बहुत ये अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब आधी बीमारी इसी से आपकी ख़त्म हो गई. दूसरी बात ये है कि हम लोग कितना भी बोलें कि टाइगर पे फोकस ना हो, पर हम सब मतलब इवन हम लोग भी, जब टाइगर एक ऐसा प्राणी है कि आप एक अलग एक्साइटमेंट होता है, उसे कितनी बार भी देखें तो आप देखना चाहेंगे. इट इज़ लाइक सेइंग कि अब यहाँ पे आप मिस इंडिया है और आप बोले कि आप वीरेंद्र तिवारी को देख लो, उसके साथ सेल्फी खिंचवा लो, तो इट इज़ लाइक कि भाई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दे नो क्या करना है. दूसरा एक चीज़ जो उम्मीद है कुछ सुधार हुआ होगा, जब हम लोग यहाँ पे थे तो कई बार पार्क मैनेजर ने कैसे काम करना था, ये रिसोर्ट ओनर चाहते थे कि ये रोड खोल दो, है ना, कटेझरी को खोल दो, इसलिए मतलब रिसोर्ट ओनर्स लगे रहते थे क्योंकि वहाँ पे टाइगर साइटिंग ऑलमोस्ट एश्योर होती थी, वहाँ ब्रीडिंग टाइग्रेस होती थी. तो ये मतलब मुझे लगता है कि आज काफ़ी मेरे ख्याल से अब तो सुधार हो गया होगा, उम्मीद मैं करता हूँ. पर वो एक तरीके से बन जाता है कि आप मैनेजमेंट में इंटरफियर करना, कौन सा रोड खुला रहेगा, कहाँ गाड़ी जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, ये तो पार्क मैनेजर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. और दूसरा एक चीज़ जो मेरे ख्याल से अब मैंने देखा मोहरली में बन रही है, जो सर के टाइम में एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना था, और बहुत जगह विदेशों में भी जैसे आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ समय इंटरप्रिटेशन सेंटर से होके गुजरना मतलब मैंडेटरी होता है, या एक ओरिएंटेशन जिसको हम बोलते हैं. मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी शुरू हो जाएगी कि एक ओरिएंट करना है, क्योंकि हर आदमी अब एक ही जिप्सी में, आज सवेरे हम सर के साथ ही गए थे, तो अब चौहान सर भी थे, पर हर आदमी के देखने का तरीका अलग है. कोई कुछ देख रहा है, कोई मतलब पक्षी ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अब इतना, एक तो मुझे एक जो लगता है सर बहुत महंगा हो गया है हर चीज़. अभी बीच में मैंने सुना कि रणथंभौर में किसी ने इंक्वायरी किया किसी होटल वाले से, एक दिन की सफारी का 95,000 रुपया, 40,000 पर राउंड सफारी का, 2 राउंड का, और 15,000 रहने का. अब आप सोचिए, मुझे तो लगता है कि हम जैसे लोग भी ताडोबा देख नहीं सकते, मतलब इतना महंगा है. अगर 1-2 सफारी यहाँ करनी है और किसी रिसोर्ट में रहना है, तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे ये सिर्फ अमीरों के लिए होता जा रहा है.
और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनके मतलब दायरे पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो इस बारे में भी मेरे ख्याल से अल्टीमेटली जो हम इको टूरिज्म चाहते हैं, मतलब आज हर आदमी लग्जरी चाहता है, मतलब वो घूमने मतलब यहाँ ज़रूर आता है। और एक ये भी हो गया है, जैसे कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का इतना क्रेज़ हमने देखा लोगों में, मतलब अब मुझे फ़ोन कर देंगे, नहीं आप बोल देंगे तो हो जाएगा। मतलब ये जैसे ताडोबा इज़ ऑल्सो टॉप मोस्ट, लाइक 5 टाइगर रिजर्व में तो ज़रूर है, पर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जैसे अगर हम प्रमोट भी करते हैं ना, तो जैसे हाई एंड बनते जा रहा है। मतलब अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं विदेशों में अगर आप प्रमोट करते हैं, तो अल्टीमेटली अपने देशवासियों को देखने मिलेगा कि नहीं। मतलब मुझे लगता है चंद्रपुर वाले देख पाएंगे कि नहीं, मतलब कभी कभी ये लगने लगता है। तो एनीवे मतलब जो इतना बड़ा जो ये इवेंट हुआ है, और पिछले 10 सालों में काफ़ी, मतलब इवन मैं पार्क का मैनेजमेंट भी देख रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मतलब धीरे धीरे मुझे लगता है कि लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होगा, और लोग जो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब सिर्फ टाइगर पे फोकस ना करें और बाकी चीज़ों पे, बाकी मतलब जीव जंतुओं पे भी ध्यान दें, वो धीरे धीरे उसमें आएगा। और उसमें सारे हमारे जो गाइड हैं या हमारे जो ड्राइवर्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होगा उनको ओरिएंट करने में। बस मेरे ख्याल से समय भी ख़त्म होते जा रहा है, तो एक बार सभी को, पर्टिकुलरली ताडोबा से तो हम लोगों का तो मतलब जुड़ाव है। वी फील रियली प्राउड कि वी हैड बीन पार्ट ऑफ दिस मतलब डेवलपमेंट। और यहाँ पे एस.एच. पाटिल सर एक और फील्ड डायरेक्टर भी हैं यहाँ पर, तो उन काफ़ी लोगों ने मतलब ये ओवर द पीरियड मतलब आज इस स्थिति पे आया है, और हम इसे चाहेंगे हम सब लोग कि ये मतलब देश का सबसे बेस्ट टाइगर रिजर्व। थैंक यू धन्यवाद सर। I'll just take one. I just want to acknowledge the efforts. बहुत लोग बोलते हैं कि ताडोबा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा हो गया, तो उसमें बहुत लोगों का सहयोग है, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स का और वन मजूर्स का। और उसमें मैं मतलब नाम ठीक नहीं है लेना, फिर भी कुछ लोग हैं जैसे हमारे रामा वर्भे जी है, देन वी हैव माजिद शेख, वी हैड मोहरले गार्ड हमारा। बहुत लोग ऐसे हैं, मारुति बांदोरकर, ये लोग ऐसे हैं कि जिनके बिना ये पार्क आज जहाँ है वहाँ नहीं पहुँच पाता बहुत। और हमारे उसके ऊपर अगर जाइए तो हमारे जो मेरे साथी जो थे, मेरे साथ श्री गिरीश वशिष्ठ, कैन यू प्लीज स्टैंड अप 1 मिनट। गिरीश वशिष्ठ हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम कोलसा में किया, ताडोबा में किया, बाद में डीडी करके किया तिवारी साहब के साथ। तीखे जी हैं, मिस्टर तीखे, अरुण तीखे होते ना आता गेले, ओके, अरुण तीखे आहेत। और मेरे साथ मिस्टर कांबळे भी थे, गोडबोले साहब भी थे, और बहुत सारे थे। और हमको सपोर्ट जो था वो श्री भगवान साहब का था, सो आई वांट टू एक्नॉलेज हिज एफर्ट्स ऑल्सो, जो कॉन्फिडेंस हमको देते थे, यू गो अहेड, आप आगे बढ़ो, हम जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस टाइप का सपोर्ट भी बहुत लगता है अपने फील्ड स्टाफ का, अपने कलीग्स का, और एक टीम बिल्डिंग वाली जो बात है, तो फॉर एनीथिंग टू सक्सीड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। और आप सभी अनुभवी लोगों ने अपना अनुभव और विचार साझा किए, उससे काफ़ी मार्गदर्शन हुआ। और एक और चीज़ कोट करना चाहूँगा, एक क्वेश्चन है मैडम, अगर वो अब ले सकते हैं तो ले लीजिए, काफ़ी देर से वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। और एक चीज़ शायद किसी ने पॉइंट आउट नहीं की, मेरे कुछ साथी आज सुबह यहाँ पे ड्राइव पे गए थे, उन्होंने बताया कि प्लास्टिक बहुत स्ट्रिक्टली बैन है इस पार्क में, जो कि एक बहुत ही मतलब इच्छा शक्ति का द्योतक है। और जब तक इसमें सभी लोग ना मिले, नहीं तो इस चीज़ को लेके मैं कई सारे नेशनल पार्क में साइकिल चलाते हुए गया, प्लास्टिक बैन नहीं हो पाता है क्योंकि कई सारी कम्युनिटीज़ में वो एक पॉलिटिक्स होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो चीज़ अगर आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर ली है तो आपने आधा रास्ता तय कर लिया है। और मैं तो पहली बार तडोबा आया हूँ, और मैं तडोबा से कल परसों बाहर चला जाऊँगा, लेकिन तडोबा मेरे से बाहर नहीं जाएगा, तडोबा विल स्टे विद मी। सॉरी फॉर गिविंग दिस क्लीशे स्टेटमेंट। आप हेलो, सुनील करकरे, फुल टाइम नेचुरलिस्ट, वाइल्ड लाइफर। 1986 में मैंने पहला मेरा वाइल्ड लाइफ नेचर एजुकेशन कैंप लिया था मुंबई में, तब से मैं वाइल्ड लाइफ में हूँ, कैंप कंडक्ट कर रहा हूँ। 1994 में मैंने ताडोबा में मेरा पहला नेचर एजुकेशन कैंप कंडक्ट किया, वो अभी भी चल रहा है। लास्ट अक्टूबर में भी मेरी एक चेन्नई की स्कूल की बैच थी। इतने साल से ताडोबा की पूरी डेवलपमेंट और ये अलग अलग स्टेट में
अलग अलग जगह पे मैं नेचर एजुकेशन एक्टिविटी कंडक्ट करता हूँ और डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, इको टूरिज़्म या वाइल्ड लाइफ सफारी, चार उसमें लोग इन्वॉल्व, चार कंपोनेंट है। एक आने वाले लोग जो टूरिस्ट, दूसरे वाइल्ड लाइफ मैनेजर जो पार्क जंगल जिसके मैनेजर है, तीसरे गाइड और वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ साइटिंग के ऊपर वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म चलता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यदि ऐसा रहता तो दांडेली आप जाके देखो, कर्नाटक में 0 वाइल्ड लाइफ साइटिंग में पूरे साल भर टूरिज़्म चलता है। और मैं काफ़ी लोगों को ले गया हूँ या डिपार्टमेंट के लोगों को ले गया हूँ, वहाँ का एक सेटअप जो बना है वो दिखाने के लिए। दूसरी बात, टाइगर सेंट्रिक टूरिज़्म, ठीक है, टाइगर दिखता है, लोग टाइगर के पीछे लगे हुए रहते हैं। मैं कैंप कंडक्ट करता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, अगर आपका कुछ प्रश्न हाँ, है नहीं तो प्रश्न नहीं, मेरे को कुछ बोलना था। एक मिनट की बात सर, है। हम बहुत लेट हो रहे हैं, वी हैव अनदर सेशन ऑल्सो, वी डिडंट लेट आवर स्पीकर्स ऑल्सो स्पीक। एक मिनट। श्योर सर। हाँ, तो वाइल्ड लाइफ, तो उसमें मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। यदि रूट अलग से बना दो आप, तो उसमें सब पीछे टाइगर के ही लगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तीसरी बात, गाइड, मैं कल ही इनके क्विज कॉन्टेस्ट कंडक्ट की, मैंने इनको बताया कैसे बताया जाता है। ये लोग, मैं काफ़ी साल से इनको देख रहा हूँ, पहले एक भी गाइड नहीं था, अब सब मेरे साथ थे। कल मैं देखता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें बताने लगे हैं, पर अभी बहुत सारी चीज़ें ये बता सकते हैं। कल इनको यही सिखाया गया, यही दिखाया गया। तो ये बात भी है कि ये इनके हाथ में है टूरिस्ट को। तीसरी बात, टूर ऑर्गेनाइजर, जैसे मैं लोगों को लेके जाता हूँ, तो 4 में से एक सफारी विदाउट कैमरा, एक सफारी विदाउट टाइगर। आप उसी टाइगर देखना ही नहीं है हमें सफारी में। ये टूर ऑर्गेनाइजर, टूर ऑपरेटर ये कर सकता है, ये हो सकता है और ये होता है। मैं करके देखता हूँ और ये करते रहता हूँ मैं। तो ये बात, यहाँ पे बैठे हैं सब मेरे फ्रेंड है, नितिन काकोडकर जी, वीरेंद्र तिवारी जी, बाकी सब बहुत पुराने ये रिसोर्ट ओनर है, टूर ऑपरेटर है, वाइल्ड लाइफ मैनेजर है, एक्सपर्ट्स है वाइल्ड लाइफ में। तो मैं जानता हूँ इनका एफर्ट्स है, इसलिए ताड़ोबा ये एक एग्जाम्पल बना हुआ है, ये आगे जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर श्री नरेंद्र एस गवतुरे जी को। ये भी एक नेचर गाइड हैं, कि आपसे निवेदन है कृपया एक स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी हमारे वक्ताओं को सम्मानित करें। सबसे पहले भेंट करना चाहेंगे हमारे मॉडरेटर मिस्टर रुपेश राय जी को। धन्यवाद। स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करना चाहेंगे श्री नितिन काकोडकर जी को। हार्दिक धन्यवाद सर। श्री वीरेंद्र तिवारी जी को। श्री अनिरुद्ध चाव जी को। श्री रंजीत मंडल जी को। और श्री अनुराग शर्मा जी को। निवेदन है एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। And I would request Mr. Anirudh Chowji and Mr. Rishi Kapoor to kindly stay back on the stage for the next panel discussion. Mr. Chowji would be moderating this session and Mr. Rishi Kapoor will be our eminent panelist. But before we move on to the next panel, ladies and gentlemen, I have a small announcement. Tadoba Andhari Tiger Reserve is extremely proud and happy to announce another extremely unique initiative to help the conservation. Presenting the Twilight Embrace, a limited edition art collection of paintings and breathtaking sunsets, fundraising through the patrons and recurring engagement is definitely the next step in the conservation. According to the patrons, walls with the warm hues of orange, yellow and gold and
Acting as an everyday reminder about Tadoba, nature's gift is just one of the things achieved. In fact, the paintings shall engage through a line scoreboard and provide updates in the progress and actions undertaken by the department, thanks to the fundraise through the unique initiative. And that's not all. In fact, the interaction and engagement shall continue through complimentary digital subscriptions of Tadoba Diaries and also being part of the privileged patron community of the Tadoba Andhari Tiger Reserve. The paintings invite you to pause and take a moment to appreciate and show the stillness of the serene, raking in emotions of wonder, awe, comfort, and warmth, and while doing so, they also saturate the human desire. And ladies and gentlemen, we request all the dignitaries and guests to kindly share the valuable feedbacks. We are right outside the auditorium and would request you to spend a moment with us. We also request to contact Gauravi on 892-8766-734 from Wild Focus by Hot Mugs team, our official merchandise partner. And may I now invite our moderator for this session, Anirudh Chowji, and I would like to invite our eminent panelist, Mr. Rishi Kapoor, once again on the stage. I invite Ms. Deepika Chaudhary, Director of Tigers and CEO, Candid India, and Ms. Bhavna Menon, Project Coordinator, Last Wilderness Foundation. Inviting Mr. Rishi Kapoor to once again join the panel. Rishi sir, you are invited once again on this panel. Oh, I think he's there. Sorry. So ladies and gentlemen, we welcome you to this session on the future of wildlife marketing, and today we dive into the world where passion meets purpose, where storytelling intersects with science, and where every click, share and campaign contributes to a wider, more connected planet. And as we envision the future of wildlife marketing, let's remember that every campaign, every post, every partnership matters. Whether you are a marketeer, a traveler, or a conservationist, your voice can amplify the roar of the wild. Let's market wildlife with purpose, passion, and commitment for our planet. And that reminds me, ladies and gentlemen, for you to use the hashtag TATTR or WWD, hashtag WWD 2024, whenever you use the social media to post your tags about the Tadoba festival. With those words, I hand over to our distinguished moderator, Mr. Anirudh Chowji, who is an experienced ecologist and expert in ecotourism, has made significant contributions to environment conservation and community empowerment. As the founder of Run Mangli Foundation, he has woven together his passion for nature, sustainable practices, and uplifting the local communities. The Run Mangli Foundation focuses on providing livelihood skills to forest neighboring communities, and by reducing the dependence of forests, the foundation contributes to the conservation efforts. So over to you, sir, to carry forward the proceedings. Thank you so much. I saw some people walking away. I think they missed out the best part. Best is always kept for the last. So, all three of you, let's go. Okay. So, where would you like to start? I think we'll give the ladies the honor. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank the organizers and the teams, the administration behind this spectacular event, the conceptualization, then conceiving it and executing it. It's not a small job. It's a really lot of effort. And thank you very much for inviting us to speak on this session. This is the last session of the day, but we promise you that it's going to be engaging and interesting. I am Deepika Chaudhary. I am the director of Top Tigers, which is a non-profit organization based in New Delhi. We started 20 years ago,
And we started with just a handful of members who were passionate about saving the tigers. So as you make out from the name, TOF Tigers, when we started with saving the tigers, but as we moved along, we added more and more members who were passionate about sustainable tourism, ecotourism, and also working very closely with the communities. So now we are a very strong community of more than 200 members from all over India and overseas, which includes the lodge members, lodge owners from various national parks, destination management companies, and also foreign tour operators. So, and all these people, all these organizations, individuals are really, really passionate about sustainable tourism. So here I'm going to talk about the role of partnerships in the future of wildlife tourism. So as I said a minute ago that when we started this organization, we were just a handful of people, individuals rather. But now the role of partnerships is very important. We work on a model called, it's a business to business pressure, peer pressure we call it. So for example, an operator based in UK or USA, they are following sustainable practices, and they are looking to do business with companies or organizations who are following the same methods, same ethos, who are following the same practices in promoting wildlife tourism in a sustainable way. So that's a kind of pressure we build. The operators are asking for companies to work with companies who are following these practices, and the companies who are here, they are now looking for various ways how they can upgrade themselves, how they can follow practices and give a beautiful experience to their travelers, to their clients. So this is one kind of partnership which is very important. You work with organizations which are following the same path as you. And second is to work closely with eco-friendly travel brands. So these brands can be a destination management company, or a wildlife lodge, or a naturalist, or a guide. So these are the people who not only walk the talk, they actually work in the areas where they can uplift the communities, where they can work towards the betterment of the locals, and involve everyone who is going to benefit from these initiatives. And third partners are the ones who are local communities, because without the local communities, we cannot work in this segment. We need to have a good partnership with local communities, because these communities will also benefit with the partnership, because the organizers, the companies bring these practices, sustainable tourism practices to them, and with these practices they are ultimately going to be the benefiters. So and as the young girl in the previous session, Naveli, I'm correct, she mentioned that no, we have to teach the youngsters, the young generation, about how they can contribute towards following the sustainable goals in their personal lives, and eventually it leads to the bigger goals. So we need to partner with such individuals who could be influencers in their own way, and they are the torch bearers, and they are the ones who are going to teach their generations. So that is a very important partnership in my view. And then we have various other forms of partnerships where we go to various travel trade shows, we go to we organize fam trips, and we partner with other organizations, and we follow the same business models. So in my opinion, these partnerships are very, very important to achieve the goals which we are all working towards. Thank you. That's wonderful. Something that I really appreciated of what you mentioned of TOF is, you set standards for other people in the industry, जिसके कारण they are inspired
or they're influenced to follow the similar path. Otherwise, we'll all do a very common kind of a tourism without looking at the communities or without looking at the wilderness. But the kind of education that is imparted by these lodges and resorts is something really wonderful. Thank you. Thank you so much, Deepika. I'll do it really fast. नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद जो रूम में अभी रह गए हैं. आई नो सब बहुत थक गए होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. थैंक यू सो मच कि आप लोग सब ताड़ोबा से आए. मेरा टॉपिक जो है एक्चुअली समुदाय को लेकर ही है. मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है वाइल्ड लाइफ मार्केटिंग का वो समुदाय ही है. यस टाइगर्स हैं, यस बर्ड्स हैं, लेकिन अगर समुदाय नहीं होगा तो दो चीज़ें नहीं होंगी. एक तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की इग्नोर कर रहे होंगे, दूसरा कॉन्जर्वेशन नहीं हो पाएगा. और अगर वाइल्ड लाइफ रहेगा ही नहीं तो टूरिज़्म कहाँ से आएगा. तो कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हैं समुदायों के बारे में जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, स्पेशली हमारे ताड़ोबा गाइड्स के साथ. अगर ऐसे कुछ स्टोरीज ताड़ोबा में भी हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा. मेरी सारी जितनी भी सुंदर स्टोरीज है सब पिछले 15 साल से समुदाय के साथ ही हुई हैं. नेक्स्ट, ये एक ऐसा समुदाय है पारदी, सबने सुना होगा, जिनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था. एक एक्सटेंट तक कि डॉक्टर भी बोलते थे अरे ये तो शिकारी है, मैं इसका इलाज क्यों करूं. इसकी वजह से पन्ना में सारे टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए. तो उनके साथ हमने ये शुरू किया वॉक विद द पारदीज. आज तकरीबन 3000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेस्ट इनके साथ वॉक पे जा चुके हैं. और जैसे कि आपको पता है पन्ना 0 to 66 टाइगर्स पे जा चुका है. ये इसलिए हुआ है, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है. दूसरा कंपोनेंट था समुदाय. नेक्स्ट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एनजीओ है कान्हा में जो बैगा समुदाय के साथ काम कर रहा है. वो जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं उनका नाम है सरदार बैगा. वो फर्स्ट है अपने कम्युनिटी में जिन्होंने अर्थ फोकस फाउंडेशन को अपनी ज़मीन दी और अर्थ फोकस ने उसको बंजर ज़मीन से एक उपजाऊ ज़मीन बनाकर अब वहाँ पर फूड सिक्योरिटी है. वहाँ पे समुदायों को बाहर जाना नहीं पड़ता. चिली पिकिंग के लिए आंध्र प्रदेश पहले जाते थे, अब नहीं जाना पड़ता, गांव में रहते हैं. उसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं. और ये बहुत सुंदर स्टोरी है बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज वो जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो माताएं हैं. एक तो ये स्टोरी हो गई इससे कि सरदार की वजह से आज 200 एकर्स जो है कान्हा में वो उपजाऊ हो गई है. जो बैगा पहले फार्मिंग नहीं करते थे आज फार्मिंग करते हैं और उसकी वजह से उनको रोज़ फूड सिक्योरिटी भी मिलती है और उनको अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ता. ये जो हैं माताएं ये टाइग्रेसेस जैसी हैं. तकरीबन 500 महिलाएं इस कमेटी में एक माता समिति में जुड़ी हुई हैं और वो अपने बच्चों के एजुकेशन में ना केवल इंटरेस्ट लेती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इंटरेस्ट लेती हैं. अगर कोई बच्चे का स्कूल टूट रहा है तो वो जाकर ज़िला पंचायत को बताती हैं कि मेरा बच्चा एक टूटे हुए स्कूल में क्यों बैठा है, या मेरे बच्चे के स्कूल में साउंड सिस्टम क्यों नहीं है, कि उसको अच्छा यूनिफॉर्म्स नहीं है. तो ये जो स्टोरीज़ हैं इसके वजह से अगर हम बाकी लोगों को भी बताएं समुदायों के बारे में तो ना केवल एक वाइल्ड लाइफ से टाइगर से हट के एक नीश बन सकता है बल्कि कॉन्जर्वेशन भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो सकता है. नेक्स्ट, पशु पक्षी सबने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने सुना होगा. सुविनियर बनाता है, एथिकल सुविनियर बनाता है. एथिकल सुविनियर मतलब कि वो जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है उसी से बनाते हैं. तो अगर जैसे कि वो अगर इयररिंग्स बना रहे हैं तो मिट्टी के ही बनाते हैं और वहीं की चीज़ें डिपिक्ट करते हैं अपने सुविनियर्स में जो वहाँ ऑलरेडी है. तो अगर बांधवगढ़ में बाघ है तो बाघ से रिलेटेड सुविनियर बनाएंगे, अगर भरतपुर है तो चिड़िया से रिलेटेड बनाएंगे आदि. तो इसके पीछे जाइए एक बार. तो इसके अलावा कि वो सुविनियर्स बनाते हैं, ऑलमोस्ट 1000 महिलाओं की ज़िंदगी बदल गई है क्योंकि वो अपने घर में जाके बताते हैं कि वो ऑन अ डेली बेसिस
अपने हस्बैंड से ज़्यादा इनकम ला रहे हैं, वो सोल अर्नर्स है अपने फैमिली में, और ये भी कितनी सुंदर स्टोरी है। तो ना केवल उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रहा है, लेकिन वो अपने में एक बहुत खूबसूरत स्टोरी बन गए हैं। लास्ट स्लाइड। हाँ जी, और पशु पक्षी का स्टॉल भी है सर ग्राउंड्स में पशु पक्षी का स्टॉल भी है, आप जाकर देख भी सकते हैं। और जो भी आप उठाएंगे वो कुछ भी दिल्ली बॉम्बे से बन के नहीं आया है, वो सारे अपने प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास जो समुदाय हैं उन्होंने बनाया है। और जितना भी आप खरीदते हैं उसका 50% वापस समुदाय को ही जाता है। ये लास्ट है मेरे स्टोरी में। क्राफ्ट्स फॉर कंजर्वेशन बांधवगढ़ में हमने एक आउटलेट खोला है पशु पक्षी का, जिसमें तकरीबन 12 एनजीओ का सामान है। मतलब आप सोचिए कितनी कहानियां हैं उन प्रोडक्ट्स में, और तकरीबन 2500 आर्टिसंस जो हैं इससे सपोर्टेड किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, और मेरा सोल्यूशन अनिरुद्ध जी ये है कि वाइल्ड लाइफ, अगर फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ मार्केटिंग हमको करना है तो हमारे फ्यूचर जो कि समुदाय पे हमको फोकस करना पड़ेगा, ताकि हमारे जंगल भी बच सके और समुदाय भी खुशहाल रह सके। नमस्ते। Bhavna, really wonderful story, but I have something to tell you. Just one second. I have something to tell you. हमारे यहाँ मदनापुर में या अगरजरी में, सीताराम पेट में, we have similar walks. जंगल में जाते हैं, कुछ वॉक्स ऐसे हैं जिसमें खाली लेडीज गाइड्स होते हैं, वो पूरा वॉक कराते हैं। कल रात को यहाँ से कौन गया ये सब दिखाया जाता है। एक जगह पे फॉरेन टूरिस्ट थे और खाली 3 लड़कियाँ थी। सांबर का किल वाइल्ड डॉग ने इन सब के सामने किया, और ये सब इंस्पायर आपकी स्टोरी से हुआ है। ये सब मैं आपसे सुन के मैंने कहा वॉक द पारदीस के साथ वॉक द गोंडीज के भी हो, और वो ताडोबा में लेडीज़ की टीम है और जेंट्स की भी, वो इम्प्लीमेंट कर रही है। थैंक यू सो मच, इनफैक्ट थैंक यू सो मच। Okay, good evening everyone. Listen, I'm tired sitting, so I'm going to stand and do a little bit of my talk. So, good evening everyone. Good evening. Well done. So, thank you Toft for giving me this opportunity, and to Tadoba management. Sir, आज का मेरा take away आपसे आया है rethink travel. That is absolutely a great takeaway. Means that is embedded in my mind. So, for everybody's benefit, my name is Rishi Kapoor, and I represent a company called Abercrombie and Kent. Easy, ANK. काफी लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता. Last year we completed 70 years, and we are a wildlife specialist company founded in Africa in 1963. And the founder chairman of the company still runs the company as we speak. We will have him with us in October, and we are taking up to Leh Ladakh, the high altitude rarefied oxygen zone. So this is a very, very special company. I am not going to talk about sustainability here because this is the last session. I have picked up 2 subjects from my topic. One is FAMS and one is advertising. Thank you. Thank you. Advertising. तो सर एक मैं आपसे डिफर करूंगा, हिंदुस्तान में अभी भी सबसे महंगा टूरिस्ट आता है। लास्ट संडे आई वॉज इन रणथंबोर with 50 Americans traveling around the world just to see wildlife. Started with snow monkeys in Japan, and as we speak, they are currently in Uganda to see gorillas, and then they end the trip in East Africa to see the big 5. 4 दिन उन्होंने इंडिया के लिए दिल लगाए. So I was there from 24th to 28th of February. I got the call to attend this event on the 27th while I was in Ranthambore. Guess what was the reason they came to India? Can anybody guess? It was tiger. So it's a double-edged sword. Dichotomy है. हाँ मैं जब बाहर जाता हूँ, जब मैं इंडिया की वाइल्ड लाइफ बेचता हूँ तो मैं बोलता हूँ इंडिया ऑल्सो हैज बिग 5. आपको पता है हमारे बिग 5 जो मैं बेचता हूँ वो क्या है? उसमें 3 कैट्स हैं. We have tigers by far. We are the only country outside of Africa which have lions in the wild. Only country, which is in Gir. Third is
We are very proud of our leopards. But अभी भी आधी दुनिया leopards देखने श्रीलंका जाती है, याला नेशनल पार्क, क्योंकि उनकी एक इमेज बनी हुई है. So ये हमारे 3 हो गए. Fourth is one-horn rhinos in Kaziranga. And fifth is we have elephants in the wild. So I always say that we also, if Africa has its big 5, India has its big 5. We of course have a very beautiful cat, and I had the pleasure of seeing it only 2 weeks ago, 14th of February. I went up to high altitude Ladakh to see the snow leopards. And I saw snow leopards. I was about 33 kilometers outside of Leh town, place called Rumbak, which is on the Stoke-Kangri trek. And a beautiful cat that I saw, which was the snow leopard. But it's more elusive. और उसका टाइम पीरियड होता है देखने का, तो हम उसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करते. Now coming back to India as a country, as a destination. So हम अपना वाइल्ड लाइफ बेचते हैं. टाइगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रणथंबोर, अभी आपने सर बात की किसी ने रणथंबोर में सफारी का प्राइस. देयर आर 4 लॉजेस इन रणथंबोर विच चार्जेस, जिनका सफारी प्राइस है 75,000 रुपीज पर सफारी. और लोग देते हैं, दे हैव क्लाइंट्स. ऐसा नहीं है कि वो चार्ज कर रहे हैं, तो वो उसका वर्थ भी देने, लेट्स से देने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो सक्सेसफुल भी होते हैं. 22,000 रुपए की नॉर्मल सफारी है, लेकिन वो लोग उसको 75,000 रुपए में सक्सेसफुली बेच रहे हैं. कैसे बेच रहे हैं? बाय रीपैकेजिंग द होल एक्सपीरियंस, वैल्यू एड ऑन्स. उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम जोन है कि नहीं है, आपको तत्काल के पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं. आपकी गाड़ी में वाटर बॉटल्स भी होंगी, कॉफी भी होगी, चाय भी होगी, बिस्किट भी होगा, हर चीज होगी. दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. और वो बिक रहा है. नाउ सो देयर इज अ टर्म दैट आई यूज इन माई मार्केटिंग, एडवेंचर बाय द डे, लग्जरी बाय द नाइट. ये टर्म टडोबा में फिट नहीं हो रही मेरे हिसाब से, जो पिछले 2 दिन में मैंने एक्सपीरियंस किया है. सो यहां पर लग्जरी क्लाइंट, मैं हमेशा लग्जरी की बात करता हूं क्योंकि वही मेरा कोर बिजनेस है. इतने यहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सस्टेनेबिलिटी और रीथिंक ट्रैवल के बारे में बात करने के लिए. मैं लग्जरी के बारे में बात करता हूं क्योंकि पैसा वहीं से आता है, असली पैसा. सॉरी टू से दैट, बट दिस इज द हार्ड फैक्ट. तो अब उनको यहाँ लाना है, मैं उनको रात को कहाँ ठहराऊंगा? बताइए, कुछ है ही नहीं मेरे पास ठहरने के लिए. कल मुझे पता है क्या चिंता हो रही थी रात को, कि रवीना टंडन कहाँ रहेगी, श्रेया घोषाल कहाँ रहेगी. At part to the Amans, to the Six Senses, to the Oberois, to the, I would like to see that. Sir, so adventure by the day, luxury. So then I will get you here. आपको फिर मुझे वो दिखाना चाहिए था सर. मैं तो सिद्धार्थ होटल में रह रहा हूं. वहां मेरा क्लाइंट नहीं रह सकता. Okay. So no, what I'm saying is, so then you have to show we are the right audience, we are the captive audience. Show us that. Yes, so that when I go back, अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ. आप 2 एब्रीवेशंस है वो याद रखिए, AC और BC. एक था बिफोर कोविड टूरिज्म, एक था आफ्टर कोविड टूरिज्म. होटल वाले के लिए आफ्टर कोविड टूरिज्म में तो मजे ही मजे हैं. होटल्स आर गोइंग फुल, जो वो प्राइस चार्ज करना चाहता है वो करता है. हमारे लिए क्या चैलेंज है? हमें कमरे नहीं मिलते, क्योंकि मोदी जी ने कहा शादी भी यहीं होगी, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है. अब तो आप मालदीव्स भी नहीं जाएंगे, अब लक्षद्वीप में ही होगा जो भी होगा. कोई कंपैरिजन ही नहीं है लक्षद्वीप का और मालदीव्स का. लेकिन होटल्स आर वेरी हैप्पी विद द पोस्ट कोविड टूरिज्म, आफ्टर कोविड tourism. Whereas we as a tour operator are not very happy because we have challenges with space availability and pricing. अगर हमको price हमने accept कर भी लिया तो space नहीं मिलती. So challenges are different. Now talking about the FAMs, that was one of my topic. Sir, हम 7.5 महीने business करते हैं.
give and take. October to March is considered to be the high season for India, both north and south. 15 दिन आप सितंबर के पकड़ लीजिए, 15 दिन आप अप्रैल के पकड़ लीजिए, तो 7 months is where we make money. Then for the remaining 4.5 months, we invest. We invest in fam trips, educational trips for our international partners, because ultimately वही हमको clients भेजेंगे. And also we train our teams by taking them to various new sections, new areas, new hotels, new opportunities, new experiences. किसी ने experience की बात की, so new experiences. So 4.5 महीने फिर हम वो reinvest करते हैं to update, educate, and rethink how we can add new products to our portfolio. So it's very important that, and most of hotel partners, okay, 2 more minutes. Most of the hotel partners, most of the, our service providers, they all come on board and give, take part in that opportunity when we say we do the FAMs and everything. Advertising, it is a subject we can talk a lot about, but God's Own Country and Incredible India are two good campaigns which are still going on. Now the Incredible India 3.30 bhi aa gaya hai. And it's an ongoing process. We also do our own efforts for advertising, be it by print media, on attending trade shows, partnering with partners like Toft, and still there is a lot of landscape that needs to be covered. So I think with the paucity of time, I will close by here, but two experiences that really changed. I've been going to safari for 33 years. One was the phone. I could never imagine that in a park, you have to surrender your phone. So it's connect to disconnect, or disconnect to connect. Secondly, proactively, one of the rangers came to us and they said, "Sir, aapki plastic ki bottle aapko submit karni padegi." And they poured our water in a glass bottle and gave it to us. Proactively they did it. So kudos to the Tadoba team who's actually doing all this. But these two things, यहाँ किसी ने पूछा था कि हमारा brand ambassador, I'm your brand ambassador, I'm going to talk Tadoba as an example to all the other national parks. Thank you. Thank you. Thank you, Rishi. I think perfect timing. I will take this last one point that I want to make. Thank you, Deepika, for bringing Rishi here. So Rishi is going to look at Tadoba. And Rishi, incidentally, 2012-13, Tadoba was unknown. 2024, Tadoba is number 2 in the country. And as Kale sir rightly mentioned, I need to give you a fam trip of only the resorts. And believe me, we have resorts to match anyone in the market. And exactly. No, because of Tough, he has come. एक मिनट चंद्रशेखर सर. Shekhar. Next. We'll keep it for next. Then he'll have to respond also. I'll also have to respond. 6:30 बज जाएंगे, बाद में उधर भी जाना है. या वही फार्म टूर पे मैं लेके जाऊंगा. I'll take them. Yes. Thank you very much indeed. And ladies and gentlemen, I would now request Shri Nandkishore Kaleji, Deputy Director Core, Tadoba Andhari Tiger Reserve. Okay, sir, we have a question there. So, please kindly make it very fast. Rishi, sir.
I'm just generalizing because you're here. What do your high value travelers offer a park like Tadoba that they should bring high value travelers rather than the current gentry that is operating at 12,000 rupees a safari, 9,000 rupees a safari? Sir, let me convert it into 100 rupees, $100, $120. It's not the price. It's not about the price. First and foremost, I have already sold my wildlife experiences for October 2025. So I'm sure Tadoba is not sold out for October 2025. We book, probably 5% of my business is last minute. The travelers that I am taking care of, they plan 18 months out. This trip, which is currently going around the world, which I was hosting in India last week, was promoted in 2022. So there is no question of me not getting the space. So that's one aspect of it. If there is a last minute bookings, एक हिंदुस्तान में word है जुगाड़. There is a way around. It's a Googled word now. It's on the dictionary also. So 99.99% we are successful in giving the experience to our guests, what they have come for. There are ways around to do it, but if they are unable to eventually, our first thing is we have to reshuffle the itinerary. Sorry, I think we're running out of time. Quickly, rephrase. My question was, Okay. why does Tadoba need high value travelers? They're already sold out. Okay. That was No, the no, question. you're- It's okay. not to, Acha. it's to the Well, park, this is- park as well as the audience. Okay, this is sir, why if you Tadoba, well, if you're Kindly happy take with, it, so you can take no, it we one can to take it one. offline also. Food for thought. Yeah. Yeah, it means, but you're sold out by domestic travelers. So, there are two different animals we are talking about. If you're happy with domestic space, you should not be doing such a big agenda. Sure. Well, ANK is here, thanks to Aditya and thanks to Deepika. Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. I would request Mr. Kale to kindly do the honors of presenting a token of gratitude to our eminent panelist. We present to let's begin with the ladies, Ms. Deepika Chaudhary. We present to Ms. Bhavna Menon. And finally to Mr. Rishi Kapoor. And after a quick group photograph, I would invite Mr. Nandkishore Kale, Deputy Director Core, Tadoba Andhari Tiger Reserve, to kindly close the proceedings of today with proposing a vote of thanks. Respected guest for today's panel discussion, all invited guests who are here, I thank you all from all, and our seniors, our secretary, our students, or especially जे गाईड मोहरलीवरून आलेले आहेत त्यांना सुद्धा धन्यवाद. आणि हा वेळेवरचा कार्यक्रम होता. टॉफ्टनी आमचे जे पार्टनर आहेत या कार्यक्रमासाठी त्यांनी अगदी दे हॅव मॅनेज द सो वेल. वी वर नॉट शुअर how it will go, but Toft has managed the whole show in a professional way. I thank you them also, especially those guests who came here with on our last call. We did 48 hours, 60 hours. So I thank them all, and I also request them that you enjoy our safaris and be here tomorrow also for CSR conference. It will be a great networking event. Thank you. Now you have to reach to the Kumar Vishwas show, so be quick.
same place as last evening. So ladies and gentlemen, on that note, thanking each one of you, we now close the proceedings for today's discussions. And tomorrow we would like to inform the CSR Enclave begins at 12 o'clock sharp. We would request you to be seated at least half an hour before that. Thank you once again for being such a wonderful audience and panelists.